क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक दो चार गुजारिशें हैं। पहली बात तो यह है, हमें बहुत खुशी होती है कि आप वक्त से पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा प्रोग्राम शुरू होगा 10:15 से, जैसा कि हमने अनाउंस किया है ऑलरेडी। और आप लोग उससे बहुत पहले लॉगिन कर चुके हैं। इनफैक्ट हम देख रहे थे जब हमारी इंटरनल मीटिंग चल रही थी, हम लोग 9 बजे से लॉगिन हैं, तो हम देख रहे थे कि 9:30 से ही लोग आना शुरू हो गए थे। तो हम बहुत तारीफ़ करते हैं, कदर करते हैं जो लोग वक्त से पहले आकर इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखना है और आप डेडिकेट कर चुके हैं आपका संडे मॉर्निंग हमारे लिए और आपके लिए। तो हम लोग तारीफ़ करते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें खिदमत का एक मौका दिया है। और हम लोग आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि इस संडे मॉर्निंग जो हम लोग टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वो इतना क्रूशल, इतना आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप लोग इसे इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी गुजारिश है कि आप अगर वीडियो को ऑन रखना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर वीडियोज़ ऑन। एंड मगर आपके सवालात और आपका इंटरेक्शन जो भी होगा हमारे साथ में चैट बॉक्स से होगा। तो आप अपने सवालात को चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, आपके कमेंट्स को चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और हम लोग आपके सवालात को लेंगे। और वेबिनार में हर 30 मिनट्स में एक ब्रेक रहेगा। इस ब्रेक में हम लोग सवाल जवाब के लिए चंद मिनट इस्तेमाल करेंगे और आपके सवालात का जवाब देंगे। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि आप अपने साथ में एक पेन और नोटबुक रख लें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि आपके सामने स्लाइड्स आएंगे और आपके सामने एक्सप्लेनेशन आएगा। आपके सामने कोई एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा तो आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आएगा। उस आइडिया को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे आप यूज़ करेंगे अपने बिजनेसेस में तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और हमने इंतज़ाम ऐसा किया है कि आपके साथ में हम ये स्लाइड्स जो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो भी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इस वेबिनार में, उस मटेरियल को हम आप तक पहुंचाएंगे ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। आप इस स्लाइड्स को बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो ये सारा इंतज़ाम है हमारे पास में। और हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि IICCB आपकी खिदमत में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के पिछले 2 साल से ज़्यादा हमने आपकी खिदमत में आए हैं। कई प्रोग्राम्स हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कौम को और हमारे ताजिर लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमारी ये उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि इस प्रोग्राम में आपको बहुत फ़ायदा हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और आप अपने टैक्स प्लानिंग को एक तरतीब में ला लें, एक सिस्टम में ला लें। जैसा हर एक घर में एक फैमिली डॉक्टर रहता है, मतलब हर एक घर का एक डॉक्टर होता है जो फैमिली डॉक्टर कहलाता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप दौड़ के उसके पास में जाते हैं और आपके पास में एक सुकून और इत्मीनान रहेगा कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम ना जानती इन्हों और हमारी सेहत के बारे में इनको मालूम है और इनके पास में चले गए तो हमने क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, इन्हों हम ना इलाज कर को तंदुरुस्त करती, बल्कि यकीन के साथ में आप फैमिली डॉक्टर को अपने इलाज के लिए जाते हैं और वो फैमिली डॉक्टर आपके फैमिली के साथ में बरसों रहते हैं और आपको इत्मीनान रहता है। इसी तरह जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, उसी तरह आपके फाइनेंशियल सेहत के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए। और ये फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके ऑडिटर होंगे और आप अपने बिजनेसेस में जो कुछ भी टैक्स प्लानिंग करना है उसे कंसल्ट करेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, तब आपको इत्मीनान से आप बहुत ही सुकून के साथ में अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अगर टैक्स प्लानिंग में आप कमी कर रहे हैं और आपके पास में टैक्स एक्सपर्ट नहीं है और आपके पास में ऑडिटर नहीं है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कानून बहुत बदल रहे हैं, बिजनेस करने के तरीके बहुत कुछ बदल चुके हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि आपका पैन कार्ड के बिना, आपके बैंक अकाउंट के बिना, आपके UPI ट्रांजैक्शन के बिना आपको कारोबार करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सारे सिस्टम मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे जितना अब हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपके सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करे, सारे ट्रांजैक्शन आपके लीगल हों। अगर आपके टैक्स को वो असेस करना चाहें या आपके टैक्सेस को वो
देखना चाहें, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखना चाहें, यकीन मानिए आपको खुद पता नहीं रहता, मगर गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को सारी बातें उन तक पहुंचती हैं। आपका हर एक ट्रांजैक्शन आप उनके इल्म में रहता है, और टैक्सेस को बचाना और टैक्सेस से आप छुपाना आपको नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, और मुश्किल के साथ में नामुमकिन है, और ये करना आपके लिए बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसके लिए आपके बिजनेसेस को आप टैक्स कंप्लाइंट बना दें। टैक्स का मतलब ये नहीं कि आप अपने मुनाफे में गवर्नमेंट को बांटें या आपको नुकसान हो, नहीं। टैक्स का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को इस तरह ढालें कि आप टैक्स कंप्लाइंट हो जाए। थोड़ा सा आपको पैसा मुनाफे में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आप दे दीजिए। इसके बदले में गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स को आप यूज कर सकते हैं, आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप लीगल तरीके से कल को अगर आपको कोई इंटरनेशनल बिजनेस समिट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपके रिकॉर्ड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आपके आईटी रिटर्न्स आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आपके पास में आईटी रिटर्न्स हैं और आप एसएससी हैं और आप टैक्स पेई हैं, तो गवर्नमेंट आपकी बहुत इज्जत करती है। और मैं जानता हूं, मैं खुद ही इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि हर साल टैक्सेस को सही वक्त पर पे करने से सर्टिफिकेट्स भेजते हैं गवर्नमेंट, जिसके अंदर गोल्ड सर्टिफिकेट होता है या सिल्वर सर्टिफिकेट या ब्रॉन्ज होता है। और मैं ये सर्टिफिकेट्स कई बार मुझे आए हैं, क्योंकि मैं जब भी आईटी रिटर्न्स को फाइल करता हूं, तब गवर्नमेंट से एक रिकग्निशन आती है कि यू आर आइडेंटिफाइड एज अ गोल्ड लेवल टैक्स पेयर। उसकी एक सर्टिफिकेट वो ईमेल में भेजते हैं, और मैं एक दो मरतबा उसके प्रिंट आउट्स भी लेकर रखा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको गवर्नमेंट से पहचाना जाता है, नवाजा जाता है कि आप टैक्स पेयर हैं, और आप गोल्ड लेवल के टैक्स पेयर हैं, सिल्वर लेवल के टैक्स पेयर हैं। ये सारी चीज़ें आपकी तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आज हमारा यही मकसद है IICCB का, कि आपके सामने हम ये सारी बातें एक एक्सपर्ट के द्वारा सुनाएं, आपको ट्रेनिंग दें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, और आपके कारोबार को बढ़ाने में हम लोग साथ दें। इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए हैं, आपको स्लाइड्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक्सपर्ट के साथ में 1-to-1 बात करने का भी मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लेकर के आपकी खिदमत में अब आए हैं। हम लोग ये प्रोग्राम को, जैसा आपको बता चुके हैं, 10:15 में इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे ICC के बारे में आपको एक पहचान देनी है। एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने प्ले करेंगे, उसको देखिए। इसके अंदर हमारा इदारा IICCB जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो की एक्टिविटीज़ क्या हैं, मकसद क्या है, और क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं a welcome video, an intro video of IICCB. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. It all started amidst the pandemic. The COVID-19 virus had taken the entire world under its clutches. The pandemic impact on economy was immense. People started losing jobs. Many businesses were forced to shut down. Lockdowns everywhere. Nowhere to go. Nothing to do. During this difficult phase, business leaders, intellectuals, and professionals joined hands from different corners of the country to frame a platform for economic upliftment of our community. We got a business chamber registered in the holy month of Ramadan in the name of Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau under Indian Trust Act. IICCB is a non-profit organization, a NGO which is spreading its arms to all irrespective of caste, creed or religion. Soon after the incorporation, we started enrolling members and organizing the managing committee. We officially launched our chamber on August 1st, 2020 virtually. Due to the lockdown, we conducted webinars virtually for the benefit of the community, such as skill personality development workshop, business investor conclave, benefits of MSME, etc. Through these digital media webinars, we reached an audience of 20,000 to 30,000 worldwide. In just 6 months,
we witnessed the first physical meet of our chamber on 31st January 2021 at JW Marriott, Bengaluru, the Economic Trends Post-Pandemic and Networking Summit. We were overwhelmed by the response from the community. The impact of the event was such immense that later we had several successful stories of this event. Applause to Mr. Azim Khan for cracking this fantastic and phenomenal contract with this networking event. Another mesmerizing event, Path to Growth Business Meet at Networking Conclave 2021 with a message to think big, was conducted on 9th April 2021 at Taj MG Road, Bengaluru. An enlightening evening filled with workshops and opportunities to explore, expand, and network. Soon after the event, we witnessed the second wave of COVID-19, and the entire nation was under the scarcity of oxygen cylinder supply. IICCB on humanitarian ground did run a free oxygen supply campaign under the project Save Life. IICCB are doing a very good job. IICCB के तरफ से मदद मिली. IICCB and they could help me. As per the Holy Quran, chapter 5, verse number 32, which states, saving one life is equal to saving the entire mankind. IICCB provided financial help to deserving candidates. IICCB provided oxygen cylinders to deserving and qualified COVID-19 patients in association with Project Smile, Zulfi Education and Welfare Trust, Benfa Charitable Trust, Almighty Foundation, San Marga Trust and Color Foundation. To conclude with this, it's an endeavor of IICCB to strive hard for upliftment of the community in coming days, as we did in the previous year. We would request our community members to join us and enroll with IICCB and start a successful story along with the upliftment of our community. Thank you for watching this video. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. My dear brothers and sisters, we would like to extend a warm welcome once again for all the participants. Time exactly is now 10:15 a.m. As we have mentioned that we will start this program at 10:15 a.m. We are starting the program on dot, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, we had participants who already have logged in much before time, and they had a chance to witness the promotional video, the intro video of IICCB, Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. And then we are extremely happy to extend this program to you. We would like to profusely thank right in the beginning for all those participants who have chosen to spend your Sunday, precious Sunday morning with us and dedicating your time to learn about taxation, planning, and to make your businesses strong and to make your businesses grow and multiply in different countries to come, inshallah. IICCB has been in the forefront to serve the community with various different topics and to invite the experts to teach us, train us, and to get the insights about what it takes to be the leaders in the world. And of course, as we talk about taxation, as we talk about tax planning, it is very important to know that Islam is the only religion which has made taxation mandatory for us. It is one of the pillars of Islam. Out of the 5 pillars of Islam, one of the pillars of Islam is on taxation. And Allah subhanahu wa ta'ala has made it obligatory on every Muslim to pay taxes, and that is in the form of zakat. Yes. Now, zakat is mandatory for every Muslim who has the capability of earning that amount, has earned that amount, and he has to pay the 2.5% to the poor and the needy. तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोगों को एक ऐसा मजहब मिला है जिसके अंदर टैक्सेस देना, गरीबों की मदद करना एक आदत है और एक इस्लाम का सुतून है, और हम इसके फॉलोअर्स हैं और हम इसको अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमें टैक्सेशन से कोई डर नहीं है एज ए कम्युनिटी, बिकॉज हमें आदत है ऑलरेडी। अब ये है कि दुनिया के माहौल में जो हमारे मुल्क के टैक्सेशन का सिस्टम है उसे हम समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये महसूस होता है टाइम एंड अगेन दैट
कि हमारी कौम में टैक्सेस से लोग दूर जाते हैं, उसे समझना नहीं चाहते, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। और कई लोगों के दिमाग में ये है कि टैक्स बोले तो हमारी आमदनी में से हमें देना, कहीं को देना, कैसा चल रहा है कि वैसा चलने को जान दें, टैक्स हम बनना क्या जरूरी क्या, ये सारी चीज़ों हम सोच को क्या करती हैं, टैक्स से दूर चले जाती हैं और इसके नुकसान बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि हम टैक्सेशन को समझें और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ा सा टैक्स बन देंगे गवर्नमेंट को, जो भी कानून बनता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ आप फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को आप ग्रो कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जिसका तारुफ आपको किया जाएगा, आपके सामने किया जाएगा, और एक्सपर्ट आपको टैक्सेशन के बेसिक से ले जाएंगे और आपके बिजनेसेस में क्या टैक्सेस लाजिम है, फैमिली में क्या टैक्सेस लाजिम है, गोल्ड के ऊपर क्या है, लैंड के ऊपर क्या है, बिजनेस के ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हम टैक्स कंप्लायंट बनने के लिए ईजी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम ये काम कर लेंगे तो फ़ख्र के साथ में हमारा बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और सुकून के साथ बिजनेस कर पाएंगे, और हम लोग एक्सपेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के IICC भी आज आपकी खिदमत में खिदमत में आए हैं। तो चलिए, पार्टिसिपेट करने के लिए चंद रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर एक बार कर लूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने घर वालों के साथ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपके साथ में आपके बच्चे भी हैं तो ये टॉपिक उनके लिए ज़रूरी है, जितना वो समझ सकें वो समझ लें। अभी से उनके दिमाग में आ जाए कि बिजनेस चलाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जो कानून होते हैं हमारे देश के और जो टैक्स कंप्लाइंट होते हैं, वो चीज़ों को वो अभी से फॉलो कर लें, सीख लें, ताकि वो जब बिजनेस में आए तो उनको टैक्स की समझदारी हो। अगर ये नहीं करेंगे तो इसके नताइज क्या होंगे? बहुत सीरियस नताइज हैं। अगर टैक्सेस नहीं बनते हैं, इनकम टैक्स नहीं बनते हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई करने का हुक्म है और ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और कई बार हमने देखा है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं टैक्स रेट होने के बाद में, इनकम टैक्स रेट होने के बाद में, कि फिर वो अपना दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने के हालत में नहीं रहते। बिजनेस हमेशा के लिए वो क्लोज कर देते हैं क्योंकि इतना ज़बरदस्त उनको झटका लगता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे चल करके नहीं होना है। आपके बिजनेस में सुकून और रहमत के साथ आप बिजनेस आगे बढ़ाना है। यही मुद्दा हम लेकर के आज सामने मौजूद हैं। आज हमारे साथ में मेरी टीम है, हमारे प्रेसिडेंट हैं जो कासाब्लांका से लॉगिन किए हैं मोरक्को से, वो आपसे खिताब करेंगे। ओपनिंग रिमार्क्स उनके होंगे अभी एक मिनट में, और उसके बाद में हमारे साथ में हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अली साहब हैं और मैं हूं और हमारे MC मेंबर्स हैं, और हम सब मिल करके ये तय किया है कि ना सिर्फ ये संडे कार्यक्रम रहेगा, ये प्रोग्राम वेबिनार रहेगा, इसका पार्ट 2 रहेगा नेक्स्ट संडे, और इसके बीच में हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करेंगे जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हमारे एक्सपर्ट से आप गुफ्तगू कर पाएंगे, स्लाइड्स को देख पाएंगे। तो ये मुसलसल एक कैंपेन है, सिर्फ एक वेबिनार करके ख़त्म करना नहीं है। आज का वेबिनार है, उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं, सारा हफ्ता चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट संडे फिर एक सेशन होगा जिसके अंदर आप इंटरेक्ट करेंगे और हमारे एक्सपर्ट के साथ में आप वेबिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये सारा प्रोग्राम लेकर के आपकी खिदमत में आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस प्रोग्राम में भरपूर कामयाबी दें और हमारे बिजनेसेस और हमारे घर आए जो है टैक्स कंप्लाइंट बन जाए और हम टैक्स बनने वाले बन जाए और गवर्नमेंट के स्कीम्स को और सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले बन जाए। तो अब मौका आता है कि मैं एक ऐसे शख्स को इनवाइट करूं, आपके सामने पेश करूं, जो IICCB के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और ये मोरक्को से हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं और इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ये इंटरनेशनल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी गवर्नमेंट से, काफ़ी दूसरे गवर्नमेंट से इनका इंटरेक्शंस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो IICCB के प्रेसिडेंट हैं और हमारे लीडर हैं। तो चलिए, आप सबके सामने हम पेश करते हैं जनाब नूरुल अमीन साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ IICCB हैं। नूरुल अमीन साहब, आपका इस्तकबाल है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्रेसिडेंशियल ओपनिंग रिमार्क्स हमें अता करें। नूरुल अमीन साहब, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। Firstly, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। Firstly, I would like to welcome all of you for this tax webinar. Alhamdulillah, Allah is kind that we could able to
offer similar services from last 2 years successfully. And today we are here again to make an attempt to showcase the challenges of taxation and what kind of what we can foresee in future, what kind of challenges we might face through today's session. We will try to throw some light on it, and we will share some insights of it, and we'll also allow all of you to raise your questions. आज का मकसद ये है कि इस इवेंट को और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया कि मकसद ये है कि लोगों को एक जानकारी के तौर पर हम लोगों की तरफ ले आए कि जो टैक्स के मामलात हैं वो आगे चलकर आसान नहीं रहेंगे। जो पहले जो गुजरे सालों में जो हम जिस तरीके से हमारा इंतजाम था कि हम साल के आखिर में इकट्ठा करके जाके एक अकाउंटेंट के पास जाके बैठते और टैक्स फाइल करा देते और वो फाइल करके रिटर्न जो है आपका रेसिप्ट आपको दे देता था। तो ये जो है मामूल था, हमारा हस्बे मामूल था। तो हम लोग खुद डिक्लेयर करते थे हमारे ट्रांजैक्शंस। कई पर तो हमारा खुद का कंट्रोल था कि हम कितना सेल दिखाएं, कितना हमारा प्रॉफिट दिखाएं, कितना हमारा रेवेन्यू दिखाएं, किस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट को हम पोजीशन करें और इसको रिकंसाइल करें। ये सारे चीजें जो है कंट्रोल में थे। जैसे डिजिटल इकोनॉमी करके एक वर्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ है सालों में, और आज की तारीख में जो ट्रांजैक्शन है हमारे पैसों के और हमारे जो मामलात हैं जो एक दूसरों के साथ हम मोबाइल के थ्रू करते हैं या गूगल पे के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो है कैप्चर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका ये लेके चलिए कि आपने जिस तरीके से कुछ साल दो साल जो है कोरोना का जो मार आपने झेला है, इस दौरान जो है गवर्नमेंट जो है पूरी इकोनॉमी को डिजिटल बना दी है और आपके पैसों का जो लेन देन है वो पूरा डिजिटल हो चुका है। मतलब पूरा मतलब कंट्रोल में है अथॉरिटीज के, और वो लोग बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं। आप वो डेटा जो है मैनेज करते हैं और उन डेटा में उनको जाहिरी तौर पे उनको एहसास हो जाता है कि कौन कहाँ पे कौन वायोलेट कर रहा है टैक्स। छोटे छोटे चीजें हैं जो हम नजरअंदाज आज करेंगे तो आगे चल के हमें तकलीफ हो सकती है। तो आप लोगों को गुजारिश है कि आज आप खुल के जितने भी आपके जहन में एक सवाल आते हो किसी तरीके की, आप ओपनली पूछा करें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम समझा पाए। और बिजनेसेस में खासकर छोटे कारोबार जो 10,000 20,000 का जो धंधा करते हैं, पहले ऐसा होता था कि हम 10-20 हजार का धंधा कर लिया, पॉकेट में पैसा लेके खर्च भी कर दिए। तो आज ये जो 10-20 हजार का जो धंधा करते हैं, आप अगर समझो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये 20,000 जो है पूरा अकाउंटेबल है। कल के दिन ये 20,000 आज अगर समझो महीने के कितने हो गए 20,000 के हिसाब से करीब हो गए 20,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए महीने के ट्रांजैक्शन। मतलब साल के आप 72 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो जाने अनजाने में, और ये 72 लाख रुपया रिकॉर्ड में आ जाता है। अगर समझो किसी वजह से आपने अगर इस तरीके को मतलब ये पूरा जो ट्रांजैक्शन को अगर आपने टैक्स में और उसके जो अदर ऑब्लिगेशंस है उसमें अगर आपने उसको कंप्लायंट नहीं किए, तो ये 72 लाख के ऊपर 30% टैक्स अगर लग गया या 35% टैक्स लग गया तो आपके ऊपर 25-30 लाख रुपया के साल के आखिर में टैक्स भरने का नोटिस आ जाए। इसीलिए आपको पहले से स्ट्रक्चर करना है, आपको एक तरीके से इस मामलात को इस तरीके से फ्रेम करना है। तो बच तो नहीं सकते आप, ट्रांसपेरेंसी है, आप कहाँ भागेंगे? अभी तो गूगल पे है, फोन पे, यही चीजों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप बच तो नहीं सकते, लेकिन आप इस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ताकि कोई अनवांटेड मुसीबत हमारे सर पे ना हो और हमारे बिजनेसेस को आगे चल के इंशाल्लाह कोई तकलीफ ना हो। तो यही मकसद है हमारा IACCB का। इंशाल्लाह आज हमारे सिस्टर हमारे साथ हैं आतिया, जो एक टैक्स एक्सपर्ट हैं। इंशाल्लाह वो जो है आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और इसके ऊपर जो भी आपको सवाल जवाब है और कोई भी आपको कंसर्न है तो आप ओपनली रेस कर सकते हैं, ग्रुप में भी रेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया जाएगा, उस वहां पर भी जो है आप तफसील से एक दूसरे की जो भी क्वेरीज है और कुछ प्रॉब्लम्स है तो रेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ मैं आप लोगों को फिर वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग एक्नॉलेजिंग our invite, and we would like to see you in today's Sunday morning and also next Sunday morning inshallah, and we'll try to see that maximum value will be added in your businesses and in your personal life. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Janab Nurul Amin Saab, and thank you very much for giving us the foresights of what we are expecting to do in this webinars, that is this Sunday and also the following Sunday. And we extremely thank you for sharing your valuable inputs
बिकॉज गलती कर कर सपर जाने के बाद में टैक्सेस को फाइन बनना, टैक्स बनना, वो अलग बात होती है। गलती करने से पहले हम लोग गलती को ना करें, इसकी तैयारी कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड दैट इज व्हाई ISCCB is always in the forefront of giving you the required training and the required information knowledge so that you can avoid the mistakes, costly mistakes sometimes, and plan yourself in a way that you will be proud of your own growth and businesses. Proceeding further, my dear brothers and sisters in Islam, I have got a very important personality who would be the moderator of this entire program alongside with me. And I would take it's my privilege and honor to introduce to you my friend, the MC member of ISCCB, and a person who has been in the training industry for more than 14 years. He comes with a background of being in corporate training, and he has his own training firm called as Revit Learning Center, which he founded way back in 2004. A person with the utmost humble nature, a very nice friend to be, and he is going to be a part of this entire program. Please join me in welcoming the MC member of ISCCB and a corporate trainer, Janab Syed Ali Saab. Syed Ali Saab, welcome to the program. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Well, thank you, Rafi Bhai, that such a wonderful introduction you've given to me. I'm a corporate trainer by profession, and also my core area is communication skills, which I train people from last 8 to 10 years now. I've been training people in different aspects of their life, which improves their communication, and also it helps them in their career to grow, in the business to grow, and also to grow in their life. And taking off, joining as a MC group in ISCB was a privilege, and also it was a dream come true for me that to serve the community, what I have the knowledge and what I can share or what I can give back to the community. Inshallah, Allah will accept my all this service, and I request your duas also. Ameen. Ameen. Moving forward, today we have a very interesting, wonderful personality who hails to be a CA by profession, and her name is called as Atiya Fatima. I would like to introduce Atiya Fatima. She happens to be a commerce graduate, and she has graduated from Mount Carmel College. To give you a little background about her, she has been practicing CA from past about 2 years now, and she has a wonderful and immense knowledge on this subject, and also experience. I and my other MC members, about a couple of days back, we wanted to take some services. So we had visited Sister Atiya's office, and we were little apprehensive at that time that a young lady and a CA, and how she can handle these kind of very critical aspects of accounts for every business. Then we happened to interact, and we found that she is a very knowledgeable, very experienced person, and she is able to handle most critical part of accountings also. And we had a very, very good experience with her, with doing business, or with taking the service from her for our organization. So this made us even to invite her, and to share her knowledge, to give back to the community what is required today as the at this point of time. It is the very important, as our President Saab and also our Vice President Rafi Bhai has told, that it is a very crucial and very important aspect, that accounts being earlier it was like about we used to do this accounting at the year end or about say quarterly, but today since it has become digitized, so due to digitization, the account has become a part and parcel of our daily life. We have to take this very seriously, that every day we need to work on our accounts. It is not that we can do it in the end of the year or somewhere. So this subject is a part of our business, a part of our life today, as we have other subjects in. So that is the reason we thought of coming out on this particular aspect and enlightening the community, also enlightening everybody here, so that they can use this knowledge
and also be compliance with the accounts and also the taxations. And a lot of people are well, they're not technically savvy or they're not able to manage their accounts professionally. So we can help them out. And also, inshallah, Atiya Madam, she will give a lot of information, and also she'll share knowledge today on each of the subjects what you have. And any questions, please raise your question on the chat box. We will try to respond to you on any critical questions and any important questions on this. So over to Atiya Madam. Let us welcome Atiya Fatima. Atiya Fatima. Atiya Fatima, can you hear Assalamu us? alaikum all. Yeah. Thank you, Mr. Ali, for the introduction. Just a small correction. I'm a CA intermediate student pursuing my articleship. Inshallah, if Allah wills, I'll write my CA final as well. So my journey began with a dream of doing something different, being knowledgeable, being able to serve the community. So I have always liked challenges in my life, and taking CA up was not less than one. I had often seen people struggling to understand their taxes, accounts, and due to which they were not understanding if the business was favorable to their side. So I decided to start an accounting and taxation firm to help and ease the services, and people are aware of what is happening and what they can do best. So I'm sure at the end of the webinar, we will be able to understand the basics of taxes, and we all will be good citizens paying taxes. So let's begin with the topic. So today we will be starting about taxes. When I have to ask about tax, what do you mean by tax? Tax is nothing but a compulsory payment which you have to give to the government. Reason? For the welfare of society and development of the country. So taxes have been broadly classified into direct and indirect taxes. What do you mean by direct taxes? Direct taxes are those where the burden and incidence of paying falls on one person. You cannot share the responsibility of so. It is progressive in nature. Higher the rate of taxes for higher people ability to pay. However, on the other hand, indirect tax, you can share the responsibility of paying taxes. That is, the incidence is shifted to other person. It is regressive in nature. Every consumer equally bears the burden of tax irrespective of their ability to pay. So I'll start off with the definition of person as defined under section 2 clause 31. Individual, a person as a sole proprietor who will run the business by himself. Then we have HUF, Hindu Undivided Family. Usually in cases of Hindus, they have a system of HUF where there is one person, main person, Karta, and all the other members are accountable to him. Then we have companies, different types of company, public limited, private limited, listed, OPC, small company, associate company, firm, partnership, LLP, association of persons or body of individuals, as in your trust, charitable associations, all these will be covered. Local authority and your artificial judicial person. So today we will be discussing the first topic, that is our direct taxes, wherein we will see the residential status of a person. How do you call yourself to be a resident? The 5 sources of income, different deductions. How do we carry forward any losses in the business? Filing of your income tax returns and the due dates. So, Section 6 defines the residence in India. If you have to be a resident in India, your period of stay should be at least 182 days or more in the previous year. Or he must be present in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days in total out of the 4 immediately preceding the previous years. If you're a company or a firm, you will be called as a resident if your place of effective management or control and management of the affairs is happening in India. When we talk about control and management, the question comes of total income. So is there any income? What about the income that I earn in India? तो क्या होता है, अक्सर लोग मेरे पास आको क्या बोलते हैं कि ये इनकम हमारे पास इंडिया से नहीं है, ये बिजनेस बाहर होको है, but it is wrong.
Our section 5 clearly states that any income which is accrued or deemed to accrue or arise in India is taxable in India. माने कोई भी इनकम अगर तुम्हें इंडिया में ले रही हो से तो उसके ऊपर तुम्हें टैक्स पे करना, जहां तुम्हें बिजनेस करी या नहीं कर को ही, you will have to pay taxes for the same. Then we have the different heads of income, that is the sources of income. So 5 different sources of income categorized as salaries, income from house property, profit and gains from business and profession, capital gains, and income from other sources. So I have also given you the different charging sections as defined by the Income Tax Act. A few important terms which we all must be aware of before we get into the slides is previous year. So our financial year begins from April and it ends in March. So April 2022 to March 2023 is one financial year. So we pay taxes for the previous year's income in the current year. So my previous year will be 21-22 and my assessment year is nothing but your financial year that we are currently running into will be 22-23. To begin off with is the salaries. Salaries is a head of income where there is a relationship between the employer and employee. So anything given by the employer to the employee comes under the head salary. It has been broadly classified as your basic salary, DNS allowance, house rent allowances that will come under taxable allowances, which are subject to certain conditions, perquisites, leave travel, gratuity, pension, voluntary retirement scheme. So all these are different types of allowances which are covered. I'm sure most of us here are salaried people, and whenever they get their salary slip, we can see a component of HRA, LTA, PF, PT. All these are the different components of a pay slip. So what happens here is there is a certain amount which will be exempted. However, the rest will be taxable. Mr. Atia? Yes. I just want to give you, sorry to interrupt you in between. No, but no, just no want to give you worries. feedback. If you can keep your mouthpiece slightly away, the clarity will definitely improve. Okay, okay, sure. And second, there is a request from the participants that you would speak more in Urdu. Okay. So would you please balance with English and Urdu, which is happening, but the request is for more of Urdu to come. Okay, okay, inshallah, I'll do that. Thank you very much. So how do we compute the tax under the salary? मतलब how do we calculate the income under the head salary? तो जैसे कि मैं बताई थी आपका पूरा basic allowances and different types of your HRA, LTA, children's education allowance. When you total up all that, you get a X amount which is called as a gross salary. Then we have the standard deductions under section 16. तो 3 deduction है. तो पहला standard deduction है आपका 50,000 का. You get a flat 50,000 deduction. फिर है आपका entertainment allowance, which is only for your government employees. Then we have professional tax. That is, I'm sure a lot of people would have noticed in their payslip saying 200 every month you will have to pay a PT, which is totaling up to 2,400 per year. So that is again a deduction. So you get a standard deduction of around 52,400 if you're an employee of any private limited company. Moving forward, you will also see another component, which is TDS. Right now, I'm just introducing you to the term TDS, which is tax deducted at source or income tax. Moving forward in the slides, we will be discussing a lot about that as well. So, then we have house property income, which is the second source of income. Here, I have covered a list of topics. Self-occupied property. That means the property in which I live in. मेरे रहने के वास्ते जो भी property मैं बना को हूँ, that is your self-occupied. Let out property. जो तुम्हें दूसरों को rent देने के लिए बना को रहती. Say for example, Mr. X has constructed 3 flats and उन्होंने वो rent को देखो ही. तो वो होता है उनका let out property. Property held as stock and trade. Anything to sell उन्होंने रखो ही. Co-owned property. For example, 2 owners, 1 property. If I have to give you a good example, it is your UB Towers. It has been constructed by the Prestige Group. They maintain, they own it also with Vijay Mallya. I'm sure most of them are aware who he is. So he owns and maintains both of them, Prestige and Vijay Mallya together. They maintain the UB City or UB Towers, which we usually call as. Then we have the different deductions which we have covered. We have
deemed ownership, a very interesting topic. Moving forward, we will discuss. And then finally, how do we compute the income? Income हमना कैसा मालूम होता है हमारे house property से कितना है. Scope of house property. House property definition simple क्या है इसका? Any building or a land which will be appurtenant. Appurtenant is nothing but attached with. तो एक land है, उसकी जो building है, that is also count as house property. Why is this definition so clear? Long back we had a case study stating citizens would tell कि नहीं हमें सिर्फ land का definition ही खाली land के ऊपर tax pay करते हैं, building के ऊपर नहीं. But that is wrong. Of course, when citizens will play with the words, government will play with the rules and sections. So they added all the terms very, very clearly so that we do not have any tax evasion in the country. Then we have a vacant land. Say for example, मेरे पास एक छोटा सा land है, which is neither am I constructing anything on it. I'm not doing anything. I don't have plans. It's just vacant for now. Barren land है. तो मैं क्या करती हूँ? To earn a source of income, I give it to people to park their two-wheeler. तो क्या करती? जैसे मेरे neighbors वगैरह रहती, उन्हों आको two-wheeler हम park करती. ये मैं, if I'm doing it out of a vacancy, it is taxable under income from other sources. However, it is my business. मेरा business है कि मैं लोगों को वो barren land दूं parking के लिए. If I'm earning 30 rupees or 40 rupees per vehicle for 1 month, I'll be earning 1200. So that becomes your profit and gain from business or profession. Moving forward, both the topics will be discussed deeply. This was just an example. Then assessee. Assessee is the person who pays the tax to the government. A taxpayer is termed as assessee. It's a technical term. He will be the owner of the property. Then there are a lot of flats that you have to sell. That is your stock in trade. Any rent which is unrealized. अब suppose क्या होता है हमारे tenants कभी-कभी हम ना rent नहीं देते. They vacate the property immediately. And sometimes your advance, the deposit amount that you take, that is also exhausted. तो हमना तब government क्या देता है? Deduction की facility देको रहता है. And if you have a property which is a let out and an SOP. Say for example, ground floor मैं खुद के लिए बना को हूँ, ऊपर के मैं rent पे देखो हूँ, तो income जो है अलग-अलग से calculate करती. तो अक्सर तुम्हें बैंगलोर में देख सकते हैं कि लोग अपने लिए भी property नीचे या first 2 floors या duplex कुछ रहता है, ऊपर उन्होंने rent को देखो रहती, तो उनका main source of income क्या रहता है? Rental हो जाता है. तो हमें इसकी income कैसा calculate करना? तो हाँ, our government has given wonderful deduction under section 24 where there is 30% का flat deduction. अब suppose मुझे 1 लाख रुपीस rent आ रहा है, तो 30% 30,000 होता है, 30,000 मेरा deduction. अब जो है मैं 70,000 के ऊपर tax पे करना. Moving forward, अगर तुम्हारे कोई municipal taxes भी pay कर को ही, क्या भी तुमना दूसरा expense आपको रहता है, वो भी तुमना deduction की वजह से मिलता है. Then we have loan concept, a very interesting section 24B. Though I'm sure a lot of people, will take loans from the financial institutions, banks, and etc. to fund for what? For construction or for repairs, renewal, reconstruction, anything. So that amount of interest which will pay for the loan will also be allowed as deduction. So if you are a let out property, for example, जो मैं rent के वास्ते property बना को हूँ, अगर उसके लिए मैं loan ले को हूँ, तो मुझे full amount जो है deduction मिलता है. But however, if it is an SOP, SOP is your self-occupied, जो रहने के लिए हमें घर बना को रहती है, उसके लिए हमें loan 1/4/1999, that is 1st April 1999 के बाद तुम्हें loan ले को रहे, तो तुम्हारा amount, interest amount up to 2 lakhs you will get a deduction. That is the maximum limit. 2 lakhs तक का तुमना deduction claim कर सकती. If you have taken before 1/4/1999, it will be 30,000. Of course, it is not going to be 1/4/1999. We have crossed a long way apart from that. So the major thing we have to remember is हम ना आराम से हमें 2 लाख रुपीस का जो भी तुम्हें interest pay करती हैं, तुम्हें जो loan लेकर रहती हैं किसी भी बैंक से, तुम्हें interest जो pay करती हैं, हमें उसे deduction की तरह claim कर सकती. तो deduction claim करने से क्या होता है? तुम्हारे taxes कम हो सकती. So all these are ways to reduce your taxes. I am here to encourage everyone to pay taxes in a very legitimate manner. You can structure your taxes in a very legitimate manner. Tax evasion is something nobody would entertain. You cannot go to zero tax. मैं tax नहीं pay कर सकती. So it is always better to pay some than to pay all. Then there is deemed ownership. A very good concept we all should be aware of.
तो लोग अक्सर क्या सोचते हैं, जिन लोगों के पास 2-3 प्रॉपर्टी रहती, उन्होंने क्या करती हैं, या तो अपने स्पाउस को या तो अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर डालती, थिंकिंग कि उन लोगों के वास्ते टैक्स एप्लीकेबल नहीं है ना, बट दैट इज एब्सोल्युटली wrong. To catch all these kind of loopholes, government came up with the deemed ownership concept. So what happens in a deemed ownership concept? Say for example, there is one person, Mr. X, and he transferred his property to the spouse. तो दो चीजें उसके पास liable होती. First is the concept of deemed ownership. Deemed ownership में क्या होता है? Though he has transferred the property to his wife, he will be held as the legal owner. He will be held as the owner and he will have to pay taxes for that. Second is the concept of clubbing of income. तो क्या होता है, वाइफ की इनकम हस्बैंड के साथ क्लब कर को, husband has to pay taxes not only for his income but also for the wife's income. So this is what will attract. So here the wife will be the legal owner, but the deemed owner, the person who has to pay taxes, will be the husband, except in case of a minor married daughter. Say for example, अगर तुम्हारी minor married daughter थी and उनको अबे ये gift के सका शादी में देखो ही property, तो तब क्या होता है, accordingly they will calculate the taxes, and if the daughter is not earning, then of course the husband will have to pay taxes. हमें बहुत ये wrong concept से चलते हैं कि अगर एक बार हमें property transfer कर डाले या हमें शादी में gift दे डाले, उसके ऊपर taxes नहीं. The concept of properties and gifts also is briefly covered in your moving slides, and we will have a discussion on that as well. Then a holder of an impartible estate. Now say for example, there is a complex, huge complex, and छोटे छोटे बहुत सारे उसमें दुकान ही, तो only the owner of that one complex will be held to pay tax. Member of a cooperative society. So cooperative societies में जो भी छोटे छोटे घर रहती, वहां भी सिर्फ एक member को they catch hold to pay taxes. Person in possession of a property, a person who has the papers of the property, and person having right in a property for a period not less than 12 years. That is a minimum you can have the property for a period of 12 years. तो वो लीज का कॉन्सेप्ट ये वो पूरा उन्होंने कम कर को ही, अब 3 साल का हमारा लीज होता है, अक्सर ज्यादा घरा में उन्होंने लॉन्ग टर्म के वास्ते भी नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. तो 12 साल तक उन्होंने तुम ना डीम्ड ओनर पहचाने जाती हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना, ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में रखना, and we should be very clear on whatever is happening, or you can also take expert advices on these matters so that you are aware and you're not in the radar of the income tax department. So I will stop here so that we can have a small question and answers round. I request all the participants to, if they have any questions, any concerns, please write in the chat box. We will address to it, and also will be, inshallah, answer all your the queries which pertaining to the tax or any problems you're facing in the taxations of your businesses or individuals. Surely, thank you, Brother Ali, for informing that. हमारी गुजारिश है कि हमारे participants चैट बॉक्स में अपने सवालात को हमें बताएं और हम इस सवालात को स्पीकर्स को देंगे, और सिस्टर अतिया विल टेक अप दिस क्वेश्चन एंड वो आपके सवाल को आंसर करेंगे. जाहिर सी बात है कि हर सवाल का जवाब शायद इसी सेशन में दे नहीं पाएंगे, तो जो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में यानी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम इस सारे वीक में इंशाल्लाह आंसर करेंगे. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं डियर पार्टिसिपेंट्स, कि टैक्सेशन का मामला जो है ना अक्सर बंद कमरों में डिस्कस किया जाता है, पर्सनल होता है. तो आप अपने सवालात पब्लिक में जितने पूछ सकते हैं आप पूछ सकते हैं. जो सवालात आपको पर्सनली डिस्कस करना है और पर्सनली आपको अपने प्रॉपर्टी के बारे में या आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करना है, उसे ज़रूर आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अतिया सिस्टर के सर्विसेज आप पर्सनली ले सकते हैं. जैसा कि हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ ये आज का एक वेबिनार नहीं है. वेबिनार के बाद में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिविटीज आपके सामने रहेंगे, और ये जो भी स्लाइड्स आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, वो स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप में फिर एक बार दी जाएंगी. आप स्लाइड्स को फिर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, रेफरेंसेस ले सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने सवाल और जवाब और का इंटरेक्शन कर सकते हैं. और नेक्स्ट संडे भी इसी टॉपिक को लेकर के और हम इन डेप्थ में जाएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे. मगर मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने क्वेश्चंस को नोट करें, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी सिस्टर बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, उनको नोट करें और अपने बिजनेसेस को टैक्स कंप्लाइंट बनाएं.
अगर आपको जीरो टैक्सेस देने का भी मौका आया तो आप टैक्स मत बनिए, मगर टैक्स कंप्लाइंट हो जाए, मतलब एसएससी हो जाए। देखिए एसएससी होना अलग होता है, टैक्स बनना अलग होता है। आप एसएससी होकर भी अगर आपके टैक्स ब्रैकेट में जीरो है तो आप बगैर कोई टैक्स बने हुए भी एसएससी बन सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि अपना बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, या अपनी फैमिली में सेविंग्स बड़े हो या छोटे हो, हमारी ये कोशिश है कि आप पहले टैक्स कंप्लाइंट बन जाएं, आप एसएससी बन जाएं, ताकि जैसा ही बिजनेस आपका ग्रो हो, जैसा ही आपकी आमदनी बढ़े, आप बरसों की टैक्स की रिकॉर्ड्स अपने पास रख सकते हैं। अगर आप किसी बैंक में जाएं या किसी लोन के लिए जाएं, या किसी लोन, मतलब सिर्फ बैंक का लोन नहीं जिसके अंदर शरीयत की इजाजत नहीं है, आप प्राइवेट लोन्स भी रेज कर सकते हैं जिसके अंदर आप पार्टनरशिप या शेयर्स दे सकते हैं। कहीं भी जाएं, आपके फाइनेंशियल हेल्थ का जायजा आपके रिटर्न्स बताएंगे। आपके रिटर्न्स, अगर आप कहेंगे कि मेरे पिछले 10 साल के मैं आईटी रिटर्न्स भरा हूं, तो आपकी इज्जत बहुत बड़ी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखेंगे। तो यही कोशिश रहेगी। तो चलिए हम कुछ सवालात के जवाब देते हैं और एक्सपर्ट को हम आपके सवालात देंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे ब्रदर अली भाई क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें और अतिया सिस्टर को आप इस सवालात को दें। Thank you, Rafi bhai. So there was a question from a brother who was asking about just a minute. What is the minimum taxable amount starts earned both from salary, business, and sale of transfer of inheritance? Okay, so if the concept of inheritance is covered briefly later, when you transfer a property on occasion of marriage, I will also tell you the definition of relative. Inshallah, you will get a clear picture there. I also read a question, people asking about the basic exemption limit. So yeah, 2,50,000 is the basic exemption limit. However, when you are a resident individual earning up to 5 lakh, you get a rebate under section 87A. That also has been covered in your further slides. And sister, there is one more उर्दू में बता देंगे सिस्टर? हाँ, एक बार उर्दू में बता देंगे, कुछ लोगों की गुजारिश तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो आपको रिबेट मिलता है। रिबेट इट्स नथिंग बट अ डिस्काउंट। रिबेट मतलब डिस्काउंट, यू विल गेट अ फुल अमाउंट। हाउएवर 5 लाख के ऊपर तुम्हें क्रॉस करे तो यू विल हैव टू पे टैक्स एट स्लैब रेट्स, डिफरेंट रेट्स, 5%, 20%, 30%, तो वो हिसाब से तुम्हें टैक्स पे करना। तो इसका मतलब यह है सिस्टर कि अगर मेरी आमदनी 5 लाख रुपए तक है साल में, तो मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटर्न्स फाइल नहीं करता हूँ, मुझे रिटर्न्स फाइल करना है, फाइल करना है आप। हाँ, रिटर्न्स फाइल करना है। मैं इनकम टैक्स को रिटर्न्स फाइल करता हूँ, मगर 5 लाख के अंदर मेरी आमदनी एक साल में रही तो मैं उसे टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स पेई, इनकम टैक्स एसएससी बनते हैं बगैर कोई टैक्स बने हुए पे करें। यस यस, वेरी करेक्ट। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हर साल टैक्स भरते ही रहना है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। अगर वो 5 लाख के अंदर आपकी आमदनी है तो बगैर टैक्स बने भी आप इनकम टैक्स एसएससी बन सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि जरूर बजरूर आप अपने रिटर्न्स को फाइल करें, इनकम टैक्स एसएससी बन जाएं, बोथ अपने बिजनेस के लिए भी और पर्सनल भी, दो भी। आप एक अच्छे ऑडिटर को आप साथ में रखें। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक फैमिली डॉक्टर होता है हर फैमिली के लिए, जिसके पास जाने से आपको सुकून इत्मीनान से सेहत आपकी वापस आ जाती है इंशाल्लाह। इसी तरह से एक ऑडिटर आपकी फैमिली के लिए और बिजनेस के लिए रहना बहुत ही जरूरत है। वो आपको बताएंगे कि क्या सिस्टम में आप फाइल करेंगे अपने टैक्सेस को, कहाँ वो बचा सकते हैं, वो कानून के दायरे में रह करके आपको बचाएंगे। और आप अपने टैक्सेस को बचाने के गवर्नमेंट ने तरीके भी दिए हैं, आप बचा सकते हैं और स्टिल इनकम टैक्स पे ही भी बन सकते हैं, एसएससी भी बन सकते हैं। यही हमारी कोशिश है कि आप टैक्स कंप्लाइंट आपका बिजनेस और आपकी फैमिली भी हो जाए। अगला सवाल अली भाई जी। अच्छा, यहाँ एक सवाल है मैडम, कैन HRA be paid in cash above 1 lakh annually, or transactions should be made every month if paying to parents here? If they're staying in a parent's home and paying some rent and they're showing that as a HRA, so it's a question like it can be paid or transaction should be made every month. Yeah. So here what happens is
it depends on the company's policy. So the minimum amount is 8,333 rupees for you to claim the HRA, which totals up to around 1 lakh rupee. So अगर तुम्हारा HRA 1 lakh rupee है तो तुम्हें उसके वास्ते तुम्हारा rental agreement submit करना as a proof to your company कि तुम्हें rent pay करनी, वो हिसाब से लेको कंपनी वो HRA क्लेम कर सकती. अगर तुम्हें कंपनी को रेंटल अग्रीमेंट या रेंट पेएबल रिसीट्स नहीं देले को ही तो कंपनी विल कंप्लीटली डिसअलाउ दैट एक्सपेंडिचर. तो यूजुअली क्या होता है कंपनीज में ईयर एंड में जो है उन्होंने क्या कर सकती हैं आपसे प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोल को कलेक्ट करती. तो ये प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या रहता है, तुम्हें डिक्लेयर कर को रहती थोड़े इन्वेस्टमेंट्स की तुम्हें रेंट पे कर रही या पेंशन में इतना आपकी पीएफ में इतना डालने को ही, वॉलंटरी पीएफ वगैरह वगैरह में. तो क्या होता है उसके वास्ते ऑब्वियसली यू विल हैव टू गिव proof for that. There is also some investments in mutual funds that you can do, ELSs, that is your equity linked saving scheme. A lot of investments as such which are there. You will get deductions for it, of course. However, you will have to submit the proof for that. Okay, there is one more question which is very common here. Why do I have to pay tax when TDS was deducted from my income? Okay, so when we talk about TDS, uska naam rather the synonym what I can say is income tax. So when the TDS is deducted, you are already paying the tax. That means तुम्हारी इनकम 5 लाख के ऊपर है जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी TDS डिडक्ट कर को है. अब तुम्हें क्या कर सकती, इसका रिफंड लेना है गवर्नमेंट से तो तुम्हें प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट सबमिट करना जब तुम्हारा इंडिविजुअल ITR फाइल करती. तो ऑन दैट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमें देख सकते हैं कि तुम्हारा टोटल इनकम क्या है. टोटल इनकम तुमना पूरे डिडक्शंस देखो, जैसे कि LIC में अगर तुम्हें कोई प्रीमियम पे करी या मेडिकल इंश्योरेंस ही या आपके चिल्ड्रंस एजुकेशन ही या आप कोई लोन लेको ही हायर एजुकेशन के लिए, ऑल दीज विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. हमें तुम्हारा फाइनल टैक्स कैलकुलेट कर को अगर कुछ तुम्हें एक्सेस पे कर को ही गवर्नमेंट को तो हमें डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकती. कैसा, बाय फाइलिंग योर ITR. तो TDS जो है मंथली उन्होंने डिडक्ट कर ले को जाती है आपकी सैलरी में से एंड यू विल हैव टू look forward for the to collect all your proof of investments and to file your individual ITR as a responsible citizen and to avail all the benefits that the department is giving you. सिस्टर अतिया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा. यहाँ पर चैट बॉक्स में मैं भी देख रहे हैं, अली भाई भी देख रहे हैं. मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या मेरा बिजनेस पार्टनरशिप है या मेरा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या मेरा बिजनेस LLP है. तो ये अलग अलग बिजनेस सेटअप हैं, तो कौन से बिजनेस को कितना टैक्स लगता है और इसके फॉर्मेलिटीज क्या है? अगर मैं फर्म का टैक्स कभी भी नहीं बना हूँ, बिजनेस करते जा रहा हूँ, दुकान चल रही है मेरी, चलते जा रहा हूँ, मगर अब आप बताने के बाद में मुझे टैक्स कंप्लाइंट बनना है, तो उसके फॉर्मेलिटीज क्या है, टैक्स स्लैब अलग अलग क्या होता है, ये बेसिक मुझे अगर आप समझा दिए तो मैं भी मेरा कारोबार टैक्स कंप्लाइंट बना देता हूँ, बल्कि बहुत से लोगों का एक इजहारे उनका एक एहसास हुआ है. अच्छा, so a proprietor जो है, अब first let's start with the basic proprietor. The proprietor is basically your individual. तुम्हें अकेले ओनर ही बिजनेस के, तो तुम्हें क्या कर सकती, पहले अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ एंड बैंक स्टेटमेंट की मदद से GST का रजिस्ट्रेशन ले सकती. तो वंस यू टेक योर GST, नहीं सर, मैं प्रोप्राइटर रहा तो भी पैन कार्ड बनाना मैं. Yeah, PAN card is important. Every individual needs to have a PAN card to run a legal business in India. तो छोटा कारोबार रंदे, बड़ा कारोबार रंदे, बड़ा कारोबार रंदे, बड़ी दुकान रंदे, yes, मैं पैन कार्ड बनाना जरूरी. yes. और every individual, तुम्हें बिजनेस करो न करो, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड are the basic documents every citizen should have. Even the homemaker, homemaker, yes, of course. Even उनका भी पैन कार्ड बनाना. पैन कार्ड बनाना, पैन एंड आधार, वो तुम्हारी आइडेंटिटी. अच्छा, तो ये हर कोई बंदे को बनाना ही है. यस डॉक्टर, मैं एक ऐड करता हूँ इसमें एक लाइन जी. सी, पैन कार्ड एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, आगे चलकर आपके कोई भी बैंक अकाउंट आप ओपन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है. तो अगर पहले आप अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन कर चुके हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आगे चल के उस बैंक अकाउंट को लॉक कर देंगे बैंक्स धीरे धीरे करके. तो आपके जो पैसे हैं जो बैंक में जमा हैं वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड के बगैर. तो पैन कार्ड जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, RBI की तरफ से भी वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है.
तो आपको ये पैन कार्ड जो है एक मामूली एक कार्ड नहीं है, इसके बिना आप बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे आगे चल के। तो मैं आपको एक और चीज फिर से तवज्जो लेके आने की कोशिश करता हूँ सारे लोगों का, कि मैं आपको शुरुआत में एक मिसाल दिया था कि 10,000 रुपया का आप जो बिजनेस करते हैं या 20,000 का धंधा करते हैं, नॉर्मली आज की तारीख में हमारा जो भी जो हमारे मिडिल क्लास या जो अंडर मिडिल क्लास के जो बिजनेस हाउसेस हैं, तो मोस्टली ये लोग इनके ट्रांजैक्शन जो है रिटेल में 10-20 हजार का तो करते हैं, ग्रोसरी बेच लिया या स्क्रैप में काम कर लिया या कोई भी धंधा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 20,000 10,000 रुपए, साल के आखिर में मैं उसका एक कैलकुलेशन आपको बताया कि 72 लाख पे करता। अगर इसका ट्रांजैक्शन के लेवल में आपने अगर बैंक के साथ में जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं बैंक से दूसरे अकाउंट्स को, अगर इसका अगर हिसाब किताब ना रखें तो सडनली आपको 30 लाख का नोटिस आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। 10-20 हजार रुपया कमाने वाला 30 लाख रुपया कहाँ से पे करता? तो इसका खतरा इस तरीके के है। तो इसीलिए आपको पैन कार्ड में जो है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, तो आपको भी महीने महीने आपके अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर करना है। ये पहले जैसा मतलब 10-15 साल पहले या अभी भी जो 2-3 साल पहले भी बहुत आसानी से साल के आखिर में इकट्ठा करके हम करते थे, वो दौर चला गया है। आप लोगों को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अलर्ट कर रहे हैं कि महीना महीना आप अपने स्ट्रक्चर कर लीजिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन अभी ट्रांसपेरेंट है। पहले आपका ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं था, आपके बस में था, अभी आपके बस में नहीं है। तो सिस्टर अमीन भाई बताए कि टैक्स को मीन पैन कार्ड को बनाना और टैक्स कंप्लाइंट बनना, ये सब हमारी बात समझ में आ गई। अगर टैक्स नहीं बने तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? गवर्नमेंट के पास क्या क्या कानून है और क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है? अगर टैक्स नहीं बनता है कोई बंदा और उसके पास इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं तो क्या क्या उसके पेनल्टी डाल सकते हैं? उसके लिए I have covered a slide at the end, so if you can we can discuss at the same time. There is a slide, तो my slide का explanation देने के बाद हम ना दोनों को और clarity रहती है and we can discuss the same inshallah. Okay, now we are up with 30 minutes. पहले 30 minutes we are done and now we can shift over to the next topic inshallah. Yes, there was one more question which I felt important of your form 16. So for all your salaried people sitting here, you will get a form 16 at the end of the financial year or probably by May 31st, which gives you a summary of the salary income that you have earned. तुम्हारा पूरा basic salary से लेको HRA and तुम्हारा जो भी दूसरे allowances थे या perquisites थे जो तुम्हारी company तुम ना देखो है। Perquisites मतलब अक्सर company क्या देती, या तो उनकी तरफ से घर देती हैं आपको रहने के लिए, या अगर आप कोई ऑफिशियल विजिट्स पे ट्रैवल कर रही या आपको कार देती, या वो जो फ्यूल पे स्लिप रहता है वो भी उन्होंने तुम ना स्पॉन्सर करती. सो ऑल दैट विल कम अंडर perquisites. So inshallah when we talk about your form 16 it will be a summary of everything that you have earned, all the TDS that they have deducted. So as I discussed, by filing your ITRs you can claim the refund amount by paying the tax liabilities which you are account. So we will move forward with the next topic. That is the business and profession. So I'm sure a lot of you sitting here are entrepreneurs doing various kinds of businesses, are into different kinds of professions and everything. So it is going to be a very interesting topic for us to discuss. The basic definition of business is nothing but any trade or commerce or manufacture of goods or rendering the services or your speculative transactions. Speculative transactions meaning you're into the sales of your shares, stocks, securities, and etc. So when you are incurring any expense during the business activities, you can take a deduction of the same according to the rules. जब तुम्हें business करने को ही तुमना जो भी expenses रहती, you can claim that as a deduction. Then there is a concept of depreciation and usage of the asset. डेप्रिसिएशन मतलब क्या, तुम्हें एक असेट को खरीदे उसे इस्तेमाल कर ले को ही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो हमें उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करती है. अकाउंटिंग में क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, जैसे कि फिक्स्ड लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड यूनिट. ऑल दीज आर द डिफरेंट मेथड्स अंडर अकाउंटिंग. बट व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, वी हैव द fixed rate of percentage which is given for each asset and a fixed usage of life. तो हमारा depreciation accounting and
इनकम टैक्स के हिसाब से डिफर करता है. तो henceforth when I am calculating the income under business profession, I will take the depreciation as per the income tax and not as per our accounting. Then very important for all of us to know is this point: any expenditure in respect of which payment made to a person of an amount exceeding rupees 10,000 in a day otherwise than by account, payee, check or electronic mode will be disallowed. Meaning अगर तुम्हें कोई भी इंडिविजुअल को 10,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में दे रही, तो that amount will be completely disallowed. So it is advisable to always have your transactions through the electronic mode, to the UPI interfaces. I'm sure हर एक, अब तो फ्रूट सेलर के पास भी UPI है, गूगल पे है, तो क्या होता है तुम्हारे पूरे transactions जो ही तुम्हारी बैंक, तुम्हारी इनकम टैक्स वेबसाइट, your GST, everything is linked to one another. You cannot escape from any of the transactions stating कि ये my transaction नहीं करा, ये मेरे account में नहीं है. How did this come to your knowledge? No, obviously the department will be aware of everything that is happening. Recently there was also, as we are all aware, we have the new income tax portal website given by Infosys, and they have launched this accounting information system AIS, जिसमें हम ना सब कुछ details मालूम चलती हैं कि every individual, every businessman, every profession, how much is he earning, unke bank transactions, every transaction which will be more than 50,000, they will suddenly pick it up and they will see the reasonable explanation. अगर आपके पास valid explanation नहीं है उस transaction का, I am sure you will be under the radar of the ITR. And moving forward, I have also covered your penal provisions and everything. So it is very advisable for everybody to have your transactions through the electronic mode. Try, I'm sure ऐसा नहीं कर सकते कि हमें एकदम zero cash तो नहीं हो सकता. I'm sure you will have some petty cash expenses and all. Petty cash expenses are completely fine, but always it is advisable so that you can have your expenses accounted, you have reasonable validations for your accounting, and you keep everything clean. Everything is on the paper, everything is crystal clear. Transparency रहना कभी भी आपके business में. When you start a business, the foundation of your business has to be very strong. You have to start it on a legal way itself. Islam also strictly prohibits for you to deceive and earn any profits. So I always advise to every person who is sitting here, make sure you're clean on the grounds and you're not deceiving any person. Let it be the government or let it be the other clients that you have and you are into the business. Moving forward, if your total sales or your turnover exceeds 1 crore, then you have to get an audit done. So audit आपके वास्ते compulsory होता है. You will have to hire a group of chartered accountants who will conduct the audit at the end of your financial year, and that is going to be a very rough activity if you do not have everything in place. 8 years तक का तुम्हें accounts maintain करना करको हमारी government बोल को है, तो suddenly तुम्हें नहीं बोल सकते कि नहीं ये 5 साल पहले था, 6 साल पहले था, मुझे याद नहीं है, मेरे पास bills नहीं. All that are just excuses. We all are aware that ignorance of law is a punishable offense. So henceforth we have to be very sure of whatever is happening in the business. I'm sure we, instead of being illiterate people, we can have some knowledge and act as literate ones and make everything on the place. So agar aapka business 1 crore to touch hoga minimum, you will have to get an audit done. And any salary or commission, अगर तुम ना कोई सैलरी आ रहा है या कमीशन आ रहा है पार्टनरशिप फर्म्स में या LLPs में, वो भी अमाउंट में डिडक्शन क्लेम कर सकती है. लेकिन अगर कोई तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी टेकन एज अ डिडक्शन, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बिजनेस हियर. देयर इज अनदर very interesting topic that the government introduced us to is the section 44 AD and 44 ADA. तो ये सिंप्लीफाई करने, अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे हिसाब से तुम्हें टैक्स पे करना चाह रही, लाइक से फॉर एग्जांपल ऑन एन एस्टिमेट बेसिस कि मेरा 10 लाख का टर्नओवर है, मैं एक 15% प्रॉफिट कमाने वाला हूं, मैं उसके ऊपर टैक्स पे करता हूं, तो तुम्हें क्या करना, बेसिक अकाउंटिंग मेंटेन करना एंड तुम्हारे टैक्स रेट्स कम होते हैं. सो यू कैन पे 8% ऑफ योर ग्रॉस रेसीट्स और टोटल टर्नओवर, whichever is higher, you will be taxed only for that. However, if your business was completely done through the electronic mode, look at the another advantage our government has given. Again, if you do everything through the electronic mode, you will have to pay at the 6% of your income itself. So that is called as presumptive
income. Presumptive income itself, it is done on a presumption basis. तो मैं एक estimate basis पर तुम्हारी income बता रही government को. However, it should match with your business. ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 लाख दिखा को 50 लाख का business कर को, you cannot play around with that. That is the reason they have put forth कि you have to maintain the books of accounts. You cannot we cannot fool the government, of course. So henceforth, that is the reason we will have to keep the sections in the mind, the practical examples. Then we have profession. Profession के वास्ते भी same applicable होता है. However, उनका threshold limit जो है 50 lakhs है, and उनका 50% of the gross receipts या any amount higher than that will be earned by them is taxable. Then we have the capital gains. So yeah, when we talk about capital gain, what do you mean by a capital gain? Any transfer of property. Property will include your gold, your jewelry, your land or building, etc. And you earn a profit out of that. Any gain, that is termed as your capital gain. तो जो भी आपकी land है या building है या आपके पास Asian paintings हैं या आपके पास jewelry है, all that will be your capital asset. So how do we calculate this capital asset? We take the full value of consideration. जो भी उसकी पूरी value है on the date of transfer. We also give the deductions, the expenditures which are in connection for the transfer. Then we get the net sale consideration. Moving forward, we will be seeing what is a long-term and a short-term capital asset. So short-term capital asset क्या होता है? Something that you hold for a period of less than or equal to 12 months, or long-term is more than 12 months. However, it is applicable for few assets. अगर आपके पास securities ही of a recognized stock exchange, the BSE and NSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, all of these, and if you have any units of equity oriented fund or zero coupon bonds are usually issued by the governments. For that, your period of holding will be less than or equal to 12 months for a short-term capital asset, and for a long-term, it will be more than 12 months. If I have to talk about the unlisted shares of a company, land or building, then it will be less than or equal to 24 months. If it is a debt-oriented fund, debentures, etc., for that it will be less than or equal to 36 months for a short-term capital asset, and for a long-term capital asset, it will be more than 36 months. So these are just the numbers and a little technical. However, let's make it a little more simpler. Question here. Yeah. This property earned from inheritance or forefather come under capital gains. Little, can you elaborate on that? Yes. So what happens here, whenever you have any property from the inheritance or the will, it is usually taxed under income from other sources. Okay. Okay. We will be covering that also. We have a section 56. We'll cover that. Now, this. Sorry to interrupt. As Ali Bhai was talking about it, there's one question from an NRI brother, Syed Hashmat Ali. He asks, I'm an NRI, have in rental income from different property as more than 1 lakh a month. I take cash from tenants. I pay property tax only. Is this okay? No, it is absolutely not okay. You will have to pay the tax because your income is arising in India. In the very beginning, I had told about the income accrual or arisal, if you guys remember. So क्या होता है, आपकी income जो है India में है, तो आपको उसके ऊपर tax pay करना. कैसा? ITR file करको. तो क्या होता है, आपकी income house property का let out के concept में आता है. तो जितना भी आपका total income, जितना भी अगर suppose आपके 3 flats ही and 20,000 is per flat का rent, तो 3 flats का होता है वो 60,000 rupees. We will calculate for the 12 months and you have to pay taxes accordingly. Sister, I would like to add one more point here. Yes. See, when it comes to NRIs holding property in India, there is an account. Normally, banks allow you to operate by name NRO. NRO so account, yes. NRO account. It is for the source of income which is earned in India back home. So I request this member to ensure that he collects the money, the rent, using this account, this bank account, so that it will be traceable. Otherwise, all your money which you are holding in cash is black, and it will attract unnecessary penalties, and also to that extent that you will be liable to pay up to 400% taxes
If he is But also continues there to will be imprisonment. Yeah, so you have to, it's a criminal offense to hold the cash in your pocket. One should understand, people आज की तारीख में जो पैसे हम लोग कैश होल्ड करते हैं, ये कैश जो है पहले बहुत आसान था हम इसको खर्च करना, आज आसान नहीं है खर्च करना अभी। तो मुसीबत कहाँ पे आती है जब आप खर्च करने पे जाते हो या कोई माल खरीदने जाते हो या कहीं पर भी आप इस पैसे का इस्तेमाल करते हो, आपको ट्रैक में लिया जा सकता है आसानी से, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन आजकल खबर होता है कि आपके अर्निंग से ज्यादा आप अगर ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ये रडार में आ जाएंगे इनकम टैक्स के। फिर आपको जब स्क्रूटनी होगा तो ये सारा का सारा पैसा जो है ब्लैक डिक्लेयर हो जाएगा, कभी मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएंगे। ये सब बहुत बड़े केसेस हैं जहाँ पे बहुत लोग जो है परेशान है आज हमारे कौम में भी। तो इसका जो है बेहतर है कि आप अपने अकाउंट में ले आइए और उसका ट्रांजैक्शन जो है बैंक के। Thank you very much. Please proceed, sister. So now we will be discussing about the exemptions which are given. So this is very beautifully given by the government to all those people who have properties which are more than 1 in number. So what does the exemption say? I'll make it very simpler in a layman language. So अगर आपके पास एक residential house है, suppose let's start with one residential house, and आपका income क्या होता है? It will be taxable under income from house property. अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करना चाह रही, बट हाउएवर यू आल्सो वांट टू सेव द टैक्सेस. सी आई विल tell you every tax expert, rather every chartered accountant, every tax expert will tell you the ways to lessen your taxes or measures to make sure that your tax liability is minimum, but not a way that you can escape from it. So here kya hota hai, these exemptions, these deductions and everything that we will be aware of, we will implement it in the practical life according to your case, and we will give you the opinion. So say for example, let's take an example of Mr. X. He has one residential house. Now he wants to transfer the same to one person to earn some money out of that. So what he can do to avoid the tax here, this is a clear way where it clearly says that you have to purchase a property within 1 year before or 2 years after the date of transfer, or you can start constructing another house within 3 years. तो क्या होता है, तुम्हारा exemption amount बढ़ जाता है. जब exemption amount हमारा बढ़ता है तो tax हमारा कम होता है and we can pay minimum taxes. तो either the cost of new residential house or the two houses, how many ever you are planning to buy or planning to construct, we can have the complete exemption. तो तुम्हें अक्सर कोई भी builders के पास जाओ या you look into all of that, the money that they earn by selling of the property, they immediately start a construction or they immediately purchase for another property. Why? So that they can claim this particular exemption. So the same goes to if you have दो घर ही, अगर आपके पास दो घर ही तो same clause होता है, but it just multiplies with the number of 2. Then we have an urban agricultural land. Agriculture income is exempted under section 10. However, it is only applicable for your rural. तो urban में क्या होता है, अगर आपके पास एक urban agricultural land है तो that land has to be used for completely agricultural purposes itself. Like if you're cultivating something, if you're growing something, farming, जो भी activities करते हैं तुम्हें, it has to be only for the agricultural purpose, not with an intention to earn business out of it. So either you or your parents have to work on that land, rather you have to use it for an agricultural purpose for a minimum of 2 years. Later on, what you can do is, if you're selling that, you have to purchase another within a period of 2 years. So either the cost of new agricultural land or the capital gain, whichever is lower, will be your amount of exemption. So these are the ways we can clearly go for exemption. So क्या हो जाता है, हमें कभी भी taxes के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं taxes बहुत रेट ज्यादा ही, इसका हमें इतना टैक्स पे करना 30%. अब कंपनीज के वास्ते क्या है, फ्लैट 30% उन्होंने टैक्स पे करना, लेकिन इंडिविजुअल्स के क्या है, डिफरेंट स्लैब रेट्स ही. तो इंडिविजुअल्स के दिमाग में यूजुअली क्या रहता है, वंस आई थिंक अबाउट टैक्स कि नहीं भाई इतने टैक्स रेट्स ही, इतने हायर टैक्स रेट्स ही, आई डोंट वांट टू पे. बट व्हाट दे आर नॉट अवेयर ऑफ आर दीज exemptions and deductions that you can take an advantage of. Then we have the section. All right. Yes. There was a question which I wanted to highlight on. Yeah. Okay. What is the percentage of tax we have to pay for the assets we don't have any income?
when there is any unrealized incomes that you have, or incomes for which you do not have reasonable explanations, 78% is the tax rates that you have to pay. I have covered it in the slide, highlighted the 78% so that people are aware of. जो भी अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, जिसके वास्ते you don't have a valid explanation, valid accounting नहीं है आपके पास, तो you cannot just say कि नहीं मुझे नहीं मालूम कैसा आया. No, all these are excuses that you cannot give, and There's you no will have a exemption here. There is no exemption for right now. no, and you cannot even take any deduction. So it's better. Sir, I think I will rephrase what Ali bhai asked. ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पास में प्रॉपर्टी है मगर उसके अंदर मुझे क्या भी आमदनी नहीं है, तो मैं टैक्स उससे क्या मैं टैक्स बनना. मिसाल के तौर पर मेरे पास में एक घर है, वो घर खाली पड़ा है, कौन भी आ रही नहीं, रेंटल क्या भी मुझे नहीं मिल रहा है, या कोई लैंड है मैं खाली रखो छोड़ी, उसके अंदर मुझे कोई आमदनी नहीं है मगर लैंड है, उसे क्या टैक्स पे करना होगा, शायद इनका सवाल है. That is only the property tax. If anything, see, we have to pay taxes only on the income that we earn. अगर तुम्हें उस चीज से इनकम बना रही, आप सपोज अब आपके पास घर है, अगर आप वो लैंड पे घर कंस्ट्रक्ट कर रही, रेंट को दे रही, तब तुम्हें क्या करना, टैक्स पे करना. लेकिन वो बैरन लैंड है, आप कोई भी ना एग्रीकल्चरल के वास्ते यूज कर रही, ना किसी बिजनेस के वास्ते यूज कर रही, तब आपको सिर्फ जो property taxes in normally you have to just follow that. Yeah, यहाँ और एक सवाल पैदा होता है कि people who are residing in their own houses. So what about that house? That is covered? No, that is a self-occupied property. You do not have any this thing. Satya, I would like to add one more point here. See, all the wealth which you have, there is a wealth tax. Okay? Irrespective of whether it is generating income or not, it will fall under wealth. And the wealth will have certain valuation, and based on that current valuation assessment, you will be liable to pay some small amount as a wealth tax. Yes, yes. Hope it is clear. The answer is fine. Yes, Alhamdulillah, it is clear. I think we can proceed further. Sister, just to keep you informed that we are at 15 minutes in the topic 2 of our webinar today. Okay. Thanks. Sure. So the next exemption, same continuing, we have covered your residential house, land, and now we have the land and building, however, forming a part of industrial undertaking. जैसे जो भी आप अगर business कर रही हैं, वहाँ पे आपकी industry है या factory है, you're manufacturing something, or it is a warehouse, what happens in those cases? In those cases, you need to use that for an industrial undertaking for a minimum period of 2 years. And to claim the amount of exemption, you have to purchase or construct another industrial taking within a period of 3 years. So what will be the amount of exemption? Either the cost of your new asset of your capital gain or the capital gain, whichever is lower. That will be your amount of exemption. Finally, we have the individual or HUF. If you have any long-term capital asset, जो आप again आपके पास घर है, assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. So these are some tax के tricks which the auditors will tell you. जब तुम्हें transfer कर ले कोई जिस दिन तुम्हारी property, वो दिन तुम्हारे पास एक से ज़्यादा property नहीं रहना. अगर आप ये deduction exemption claim करना है तो. अब जब आपके पास रहता है to claim the exemption, तुम्हें क्या करना, immediate या तो 1 साल में purchase कर लेना या तो 2 साल में construction शुरू कर लेना. It becomes easier for you to claim this amount of exemption. If you guys fail to do so, of course, you cannot claim the amount of exemption. Then we have the income from other sources. So everything that was covered earlier, if I have to begin off with your salary, your house property, profit and gains from your business profession, and capital gains. So anything which is not covered in these 4 topics will come under the income from other sources. So if I have to start off with the first income, that will be your dividend income. The dividend हमना कब मिलता है? When you are the shareholders of a company. So तुम now know final dividend देती, interim dividend देती. There are different types of dividends if we have to agree. Income tax is given a whole different definition itself under section 2 for dividend income. But let's keep it very simple. So if suppose अब Reliance Limited is a very good popular company and वहाँ की मैं shareholder हूँ, so the company will first propose a dividend and then they will declare it, for which I will receive the same. So जब dividend मुझे मिलता है, if it is more than 1 lakh rupees, then I'll have to pay tax for that. However, earlier what used to happen, the private limited companies and etc. had the concept of DDT, that is your dividend distribution tax.
उन लोग टैक्स पे करते थे, लेकिन अब क्या हो गए, द टैक्स लायबिलिटी विल फॉल इनटू द हैंड ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द डिविडेंड. सो इफ आई एम रिसीविंग द डिविडेंड मोर देन 1 lakh rupees, then I'll have to pay tax for that. Casual income, winning from your lotteries, crossword puzzles, या जो भी, अब फॉर एग्जांपल केबीसी खेलती, उसमें उन्होंने जीतती, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे करने का रहता है, दैट इज इट, फ्लैट 30%. Then you have your DID, super dances, all these are your casual incomes that you on. Betting, gambling, however, is not allowed in our Islam, but the income tax also says that when you get into all these things, there are strict taxes. You cannot claim any deductions on the same. You will have to pay taxes for it. Then there is any consideration that you receive in excess, any amount that you receive in excess from a company in which you hold the shares. Then there is interest income, any compensation received. So say for example, you're serving a company for a particular period of time, continuous serving, say for example 10 years or 15 years, the company will give you any amount as a gift from the company's side. So again, that becomes taxable for you whenever you receive that amount. Then we have the different rates. As I told, casual income के वास्ते 30% हमारा tax रहता है plus surcharge and education cess. No expenditure will be allowed as a deduction. As clearly mentioned, तुम्हें कोई भी deduction claim नहीं कर सकते इसमें, या expenditure exemption हमें नहीं ले सकते. A very interesting topic are your unexplained cash credits, investments, money, bullion, jewelry, etc. So as we all are aware, everything that we purchase of should either have an invoice for it or a valid explanation. अब suppose आपके पास ज्वेलरी है 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की, तुम्हें, लेकिन उसके पास, तुम्हारे पास purchase invoice नहीं है, तो that becomes your unexplained cash credit or a jewelry. So it is henceforth advisable to everyone to have a valid transaction, to have a valid invoice, purchase invoice for everything that you are having as an asset with you. So certainly what happens aksar rate jo for example, if I have to share one of my clients experience, earlier when I was working back then in 2020 at a firm, I had a very good client of mine, and he unke ghar mein raid hoko thi, and that raid happened continuously at around 6 medical colleges. I don't know, most of them were not aware of, maybe. So 6 medical colleges at the same time, they all went to that place. तो उन्होंने हंस को बोलने को थे कि मैडम आज तक मेरी मैं 6:30 उठ को कभी दरवाजा नहीं खुला सिवाय वो दिन के, and by his God's will, he had deposited all his cash into the banks and everything. He was a very good client, a very rich fellow, and he used to keep a lot of cash in the hand and all of it. So my principal auditor had advised him to keep it all in the bank and just not at the house like that. So next day उनके घर में raid पड़ी, and he got caught. The raid went on for a period of 6 days, continuous 6 days. They were at his house. The authorities tried the best to find the explanation, to get the best out of him, despite he had a lot of jewelry. उन्होंने क्या करे, पूजा के, he was a Hindu client, तो उन लोगों ने पूजा रूम में जो कैश रखे थे, तो अक्सर उतना नहीं रखना बोल को उनके उसके वास्ते भी उन्होंने टैक्स डाले. फिर उनके कई सोर्सेज ऑफ इनकम थे, दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम जो उन्होंने आईटीआर में नहीं दिखा को थे, तो उनके ऑडिटर वो पूरा तरह से असेसमेंट नहीं करे थे, दो दे हैड टू कैच द ऑडिटर्स एज वेल, एंड दे made him pay a very huge penalty. I think around 3 to 4 lakhs according to his income. He had to pay the penalty to get away from that particular rape. So all these things which will usually occur when you have heavy transactions in your accounts. So as I had mentioned, everything is linked. You cannot escape from the eye of the government. Let it be your income tax department, government department, you cannot run away from them. So this 78% is just the tax. One line here. See, our community is more involved on charity and donations. Okay. So people, they think when we donate or we are involved in charity or using any NGO for collecting money or doing this charity work, then taxations are not applied. Trust me, 99% of NGOs are under scanner today because of these transactions are considered to be illegitimate and illegal transactions. तो बेसिकली आपके जो चैरिटी के पैसे हैं, वो सारे पैसे जो है, आप ऐसा सोचिए कि आप दे देंगे और कल के दिन ऐसा मतलब जुर्माना आपके ऊपर आ सकता है, लेने वाले के ऊपर और देने वाले के ऊपर, कि आप जितना चैरिटी दिए उससे 3 गुना और फाइन भरना. तो ये सब चीजों का ख्याल रखिए. चैरिटी लेने वाले के पास भी आप उसका पूरा रसीद लीजिए. चैरिटी देने वाला भी जो है
उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना मतलब टैक्स को अकाउंट करें कि चैरिटी में दिया गया है, उसको डिक्लेयर करें सही तरीके से, वरना ये सब चीजें जो है स्कैनर में आएंगे और आप परेशान हो सकते हैं। तो एनजीओ जो है बहुत परेशान है, बहुत सारे एनजीओ को नोटिस मिल चुके हैं। आगे चलकर हमारे कौम में जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये सारे पैसे जो है ब्लैक करके डिक्लेयर हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके डिक्लेयर हो सकता है, आप सब स्क्रूटनी में आ सकते हैं। Yes, yes. Absolutely. जो ये आप charity देते हैं, there is also a deduction, ATG बोल को, बोले any charity, any donations that you give. तो as our president sir told, it is always better to collect the receipts. तुम्हें 1 लाख दे रही, 2 लाख दे रही, donation दियो, absolutely, Allah और तुम्हारा जज़ाए खैर दे, आमीन. But the only thing is, let's be careful. Let's be, prevention is better than cure. So let's be very careful on every step of ours so that we avoid taxes, we avoid such penalties and coming under their eyes. So you just 78. Just to add on to what Amin bhai said, ज़कात का जो अमाउंट मैं मदरसे को देता हूँ और ज़कात का अमाउंट जो मैं स्कूलों को देता हूँ, वो अमाउंट को भी रिसिप्ट लेको रख ले, तुम्हें रिसिप्ट तो ले लेते, मगर टैक्स पे करना जरूरी है क्या? उसे भी टैक्स पे करना जरूरी नहीं होता, आपका डिडक्शन है एटीजी बोल को डोनेशंस का, वो आप एक क्लेम कर सकती हैं। आप जब इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करा रही हैं अपने ऑडिटर के पास, आप उनको बोल सकती हैं कि मेरे पास रिसीट्स भी ही, मैं इतना इतना डोनेशन देखा हूँ, प्लीज ये मेरे आईटीआर में दिखाओ। तो वंस यू शो दैट श्योरली, मगर मदरसे के बहुत से मदरसे वाले एटीजी तो देते ही नहीं, उनके पास में रहता भी नहीं। तो वैसे मदरसों को हमारी कौम से बहुत सारा ज़कात का अमाउंट जाता है, बहुत बड़ा बड़ा रकम जाता है। अब पहले क्या करते थे, आते उन्होंने कैश लेते, रिसिप्ट देते, चले जाते, मगर अब क्या होता है, उन्होंने कहाँ की रहती, ये करा लो कहती, फोन पे करा लो कहती, गूगल पे करा लो कहती, नहीं तो डीडी भेज डालो कहती। अब ऐसी सूरत में एटीजी नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द मदरसा, मेरी नॉलेज जहां तक है, 99% ऑफ द मदरसा के पास में एटीजी है नहीं, और उन्होंने टैक्स बनती या नहीं बनती, या उनके फॉर्म्स भी रजिस्टर्ड है या नहीं, वो भी मालूम नहीं मुझे। तो ऐसे मदरसों को मैं सालाना ज़कात का अमाउंट देता हूँ। तो मुझे आप रास्ता बताएंगे क्या करना है बोल। देखिए, ईदर ऑफ वन शुड टेक दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप या तो उन्होंने लेना। तो ऑब्वियसली मोर फेवरेबल टू योर साइड, क्योंकि आप टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट क्लेम करना। अगर उनके पास एटीजी 12A वगैरह रजिस्ट्रेशंस नहीं है, एटलीस्ट द रेसिप्ट जो उन्होंने देती नहीं, स्मॉल रेसिप्ट, उन्होंने आपको वो व्हाट्सएप पे भी डाले, तो यू कैन क्लेम दैट आल्सो इन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। You, when you are, even if they are not, when you are filing your ITR, you can at least claim that amount as a deduction. I have got something to add into this. Dr. Saab, if it is unregistered, okay, and if the person is claiming that he's an organization, and then it is considered to be an illegal organization or illegal entity, you are not supposed to pay money to an organization which is not at all registered anywhere. It means it can be a Benami account, and you can fall into trouble. Okay, make them register, and you should make them have a PAN card. You should make them take the money through a proper bank transfer or through a legitimate manner, digitally allowed, and you should collect a receipt. And you are not exempted on an unregistered contribution, so it will be excluded from your exemption. तो अमीन साहब, आप जो हिसाब से बता रहे हैं, देन आई थिंक मदरसे वालों को और जो ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, उनको जरूरी है कि एटीजी लेकर के जो ज़कात देते हैं उनको दें, और देने वाले को भी फायदा हो, लेने वाले को भी फायदा हो। ये बहुत आसान है। एटीजी और 12A अगर सर्टिफिकेट है तो बहुत आसानी से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कम से कम रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि कम से कम वो एक्सपेंस में वो लोग बुक कर सकते हैं आपका इनकम। देखो क्या होता है, आप जब पैसा उनको देते हैं तो उनको इनकम में बुक होता है, तो बाद में वो जब एक्सपेंस करते हैं तो उसको नॉकआउट कर सकते हैं एकदम, उसको सेक्शन 33 में they can effectively take the advantage, but subject to they use that money in a proper manner। और उसके जो रेसिप्ट्स वगैरह वो खर्च के, अगर वो खर्च के रेसिप्ट अगर डिपॉजिट करें इनके पास, अगर एंड ऑफ द ईयर वो खर्च के पूरे मतलब प्रूफ्स हैं, तो एग्जम्पशन हो सकता है, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे पीएनएल में जो है खर्च में कंसिडर कर सकते हैं। जो लेते हैं उसका खर्च का कम से कम अकाउंटिंग रखें, ठीक है, वो भी जरूरी है। अगर आपके पास 12A और एटीजी नहीं है, आपके पास भी एक प्रोविजन ये है कि आप जब देते हो तो आप उनसे रेसिप्ट लें, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो जाएगा एक बार अगर आईटी फाइल करेगा तो इसको आप एग्जम्पशन में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपने चैरिटी में दिया है करके, यू कैन क्लेम टू योर पेमेंट। यहाँ पर मुझे एक बात जरूर कहनी है सारे पार्टिसिपेंट्स को,
देखिए, हम ज़कात का अमाउंट और दूसरे जो कंट्रीब्यूशंस करते हैं मदरसे को, के हकीका है, वो ये है, वो शादी है, क्या क्या की बोल को मदरसे को लमसम अमाउंट्स देती। ज़कात के अमाउंट तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स देती। अगर हमारे बड़े बड़े मदरसे और जो भी छोटे छोटे मदरसे जो भी रिसीव कर रही हैं, अगर वो टैक्स के ब्रैकेट में आकर उन्होंने ATG वगैरह लेकर अपने फॉर्म्स को, अपने NGOs को, अगर अपने मदरसों को उन्होंने टैक्स पेएबल बना दें, रजिस्टर्ड फॉर्म्स हो जाएं, तो कौम का बहुत बड़ा फायदा होता है और आगे चल करके ये सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सही है और इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देना है कि हम लोग जो है बहुत डोनेट करते हैं और बहुत ज्यादा जो है हमारा ज़कात में भी हम लोग दे देते हैं। हम ये सोच के कि हम ज़कात के पैसे दे रहे हैं तो हमने हक अदा कर दिया, ऑफकोर्स फर्ज तो हमने अदा कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के जो दस्तूर है, उसूलों के हिसाब से अगर हम बराबर तरीके से उसका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें तो हमको कोई परेशानी नहीं आ सकती, वरना ये सब चीजें जो है बाद में स्क्रूटनी में आ सकती है, क्योंकि पहले जैसा अभी दौर नहीं है। बार मैं इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। Thank you, brother. Sister, there is a question. What is ATG, Volko? So since it related to the topic that we were discussing, can you elaborate on that? Yeah, it's basically a deduction. It's a form deduction given under Chapter 6A, only for the donations if you're making to any public political parties or to any charitable institutions and trust. Including the political parties? Yes, yes, including political parties. डॉक्टर साहब, एक वो चीज ऐड करना है जी। कि देखो, किसी ने ये पूछा भी है सवाल ग्रुप में कि फाइलिंग का मतलब क्या है। देखो, आप अगर रिटर्न फाइल करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको टैक्स भरना है, आपको खाली हिसाब किताब दिखाना है गवर्नमेंट को। आप नुकसान में हैं तो आपको टैक्स आएगा ही नहीं। आप पूरा खर्च कर दिए पैसा, साल का पूरा इनकम जो है आपके पास मतलब खर्च हो गया है, तो आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन टैक्स फाइल करने से आपके जो पैसा लिए हैं और जो खर्च किए हैं वो सारे लीगल हो जाएंगे। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका लेन देन पूरा इलीगल हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, आपको पेनाल्टी भरना होगा, जबकि आपने नुकसान किया है, आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया, उसके बावजूद भी आपके ऊपर इनकम करके कंसिडर करके आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप रिटर्न फाइल करिए, टैक्स भरना आपके ऊपर लाजिम नहीं है। टैक्स भरना आपके ऊपर लाजिम जब है जब आपका इनकम है, तो आप रिटर्न फाइल करने से डरिए मत। इनकम जब होगा तो ही टैक्स होगा, आप खर्च कर दो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अमीन साहब, आपके कहने के मुताबिक अगर कोरोना में 2 साल में जो नुकसानात हुए हैं कारोबार में, बहुत से कारोबार तो बंद ही हो गए, मगर उसके अंदर बहुत से कारोबार बहुत लॉसेस में चल रहे हैं और उनको 2 साल में कोई आमदनी नहीं हुई, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। तो अगर वो IT फाइल करने वाले हैं तो ये लॉसेस को भी उन्होंने टैक्सेस में डिक्लेयर करके बचा सकते हैं क्या? अगर कोई एक सवाल। So sister, how do? Yes, yes. There is a concept of carry forward of losses. I'm sure our president will, take it forward. तो अमीन भाई, 2 साल का नुकसान में कैसा गवर्नमेंट को दिखा, क्या फायदा ले सकते हैं उससे? बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। देखो, ये क्या होता है, कोरोना का जो है नुकसान हमारे बिजनेसेस को हुआ है, लेकिन टैक्स एंगल से हमको फायदा हुआ। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। आपको समझो कि आप अगर समझो कि 1-2 करोड़ का आप टर्नओवर करते थे और आपका इनकम टैक्स बनता था, समझो 20-30 लाख रुपया आप इनकम टैक्स भरते थे। अभी आपका टर्नओवर हो गया मतलब 50 लाख, ठीक है। अब आपके ऊपर जो खर्च था वो 50 लाख रुपया, अभी टर्नओवर आपका कम हो गया, खर्च तो ज्यादा रहेगा। आपने खर्च तो एकदम नीचे नहीं कर सकते, आपका खर्च तो कुछ फिक्स खर्च रहेंगे, रेंट होंगे, जो आपके सैलरीज होंगे, जो आपके अपने खर्च होंगे। तो समझो आपका 50 लाख का टर्नओवर था, जब 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया का आपका खर्च हो गया, आप उधार लेके इधर उधर से हाथ पैर मार खर्च किए। अब ये 50 लाख का जो गैप है, इसको बोलते हैं लॉस, ठीक है, क्योंकि आपने नेट लॉस किया है। अब ये लॉस जो है, आपको हर साल आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जब तक आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, आप जब तक इनकम टैक्स भरने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक आपके पास ये लॉस बुक में पड़ा हुआ है, तो इस लॉस को एडजस्ट करते जाएंगे आपके टैक्स ऑफिशियल्स और टैक्स एक्सपर्ट्स, उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि आपको अगर आगे जाके 50 लाख का इनकम भी हुआ तो आपको टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि पिछले ईयर आपने लॉस किया, ठीक है। अब तो आप अगर समझो 1 करोड़ का लॉस किए 2 साल में, तो आपके 1 करोड़ के फायदे होने तक आपको टैक्स नहीं भरना। मतलब अगले 3 साल 4 साल तक आपका इनकम अगर 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया, तो अगले 4 साल तक आपको टैक्सेस नहीं। तो ऐसे करते करते मैं 8 साल तक आई कैन कैरी फॉरवर्ड। यस यस 8 और एक चीज है, अगर समझो आप और 2-3 साल नुकसान किए,
तो पिछले 2 साल के 1 करोड़ रुपया जमा हो गया, अगले 2 साल के और 1 करोड़ रुपया जमा हो गया, तो 2 करोड़ रुपया आपके पास नकद रहेगा। जब तक आप ये 2 करोड़ को नॉक ऑफ करके प्रॉफिट में नहीं आएंगे, जब तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो ये सब बहुत बड़े फायदे हैं जो इनकम टैक्स एसएससी हैं वो सिर्फ वो ले सकते हैं, इस फायदों को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसएससी ही नहीं है। वो नुकसान करे तो भी और फायदे में भी वो गवर्नमेंट से कोई क्लेम कर ही नहीं सकते। या ऐसे जब तक आप टैक्स फाइल नहीं करेंगे, आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा। अगर डिक्लेयर नहीं किया, आपको ये सारा पैसा आपके अकाउंट में जमा होता गया, आप बड़े नुकसान में हो, आपके पास लॉस किया हो 2 साल का, ये सारे पैसे के ऊपर टैक्स लग जाए अगर डिक्लेयर नहीं किया। Thank you very much. Sister, we have completed the 30 minutes for the topic 2 of our webinar. Okay. Now we have also taken interactions with our president, and Ali Bhai has been picking up some questions. Would you like to take questions from the participants now? Okay. Ali Yes. Bhai, please proceed. Thank you, Rafi bhai. Sister Atiya, there is one question. Yes. Can you elaborate on ATG? What institutions come under ATG? Our brother Musa has informed that religious institutions are not eligible under ATG. Is that so? Yes, it so happens that all these madrasas and everything that doctor was talking about, so these are not covered under that scope. So you need to make sure. I have something to add here. See, Yes. when you declare as a religious entity, normally the standalone, if you put it across to limit to your own community, then you will have under some kind of scrutiny. But if there is a wider scope, that if the beneficiary, even indirectly or directly, is non-Muslim or any other community in large, then the society is benefited. Therefore, it is up to the person who is representing to avail the ATG certificate. If your expert is knowledgeable and he has got the capacity to convince the authority that I am eligible to get a ATG because my indirect and direct transactions, indirect transactions involves the rest of the community people also. Therefore, it is benefited for the larger section, then you can get a benefit of ATG and you can also get a certificate. Okay. There is one more question. We spend on provisions and daily household items, and we don't get receipts. So what about No, these receipts? personal expenditures are disallowed. They're disallowed here, right? Yeah. So I mean, it is a day-to-day our daily expenses, that is. Yes, all those are disallowed. Okay. Sister, can you throw some light on education? Education, as in, can you tell me what was the Children's, question? Education bills and all. So yes, if we have to speak about the educational bills and any loan that you take for higher education, we have the section 80C and 80EE also covering the same. So usually, according to the rules, they give you children's education allowance maximum up to 2 children with ₹100. So we can claim this. Also, if you have taken any interest for the loan, you can claim that, plus any tuition fees apart from these that you pay, and you have the valid bills for the same, we can claim a exemption in our filing of ITR up to a limit of 1,50,000. Okay. Sir Syed Ali, I would like to add a couple of things here. Yes. See, when it comes to personal expenses, it is also about structuring. Okay. For example, if I'm into a business, okay, and I take my food outside my office every day, so it is my personal expense. But if you book this expense as a business expense, then you can avail the exemption. You have to take the bill, book it in the business expense. On daily basis, you can book it. Okay, so, and you can claim this under exemption if it is considered as a business expense. So kindly structure it well. Talk to your auditors. See, मारवाड़ीज और जो जैन कम्युनिटी के स्पेशली जो लोग हैं, उन लोगों का जो है बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग जो उनके सीएस वगैरह इतना अच्छा करके रहते हैं कि उनका शादी का खर्चा भी जो आपस में ये लोग करते हैं शादी के पहले के बाद के, उसके भी एग्जम्पशन ले लेते हैं. ठीक है, ये एग्जम्पशन कैसा लेना है इसका एक मॉडल है. उसको जो है आप बिजनेस एक्सपेंस में बुक करेंगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि हम सारे लोग बिजनेसमैन है ना. आप पर्सनल एक्सपेंस करेंगे तो डिसअलाउड है, आप अगर बिजनेस एक्सपेंस करेंगे तो अलाउड है. तो यहाँ जो है support if correct me if I'm wrong. Yes, absolutely correct.
I mean, I think I need to add this, that everybody has to maintain the book of records properly. Yes, yes, This can be perfect. claimed. आप Yes, सोचिए yes. 365 दिन का आपका राशन, आपका जो खर्चा है होटल में खाने का, ये सब आपका एग्जम्पशन हो सकता है। कितने लोगों ने इसका हिसाब किया रहेगा? आप अगर रोज का समझो 200 रुपया आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, 200 रुपया आप अकेले भी खाते हैं या दोस्तों के साथ 200 रुपया भी रेस्टोरेंट में चाय पानी वगैरह पे खर्चा करते हैं, तो आपका महीने का हो गया 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपया, और साल के कितने हो गया आपके 72,000। 72,000 रुपया आपके एग्जम्पशन हो सकते हैं। आप और इसके अगर रिसिप्ट होना चाहिए वैलिड। हाँ, रसीद होना चाहिए और बिजनेस एक्सपेंस में बुक करना चाहिए। आपके अगर समझो 10 लोग हैं इसमें खाने वाले, तो आपके कितने हो गए? 72,000 के हिसाब से 7,20,000 रुपया आप एग्जम्पशन लेते हैं। अमीन भाई, इसका मतलब यह हुआ, जैसे अली भाई और अमीन भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं हमारे सारे वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप टैक्स प्लानिंग को समझ जाएं तो इतने एग्जम्पशन से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं जो दूसरे लोग टैक्स भरते हैं। अगर आपके पास में एक प्रोफेशनल ऑडिटर नहीं है, क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है, रेप्यूटेड ऑडिटर नहीं है, तो ये सारी बातें वो बताते भी नहीं और आप सीखते भी नहीं और आप कभी एसएससी बनते भी नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी है, जैसा हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ में मौजूद हैं, अतिया सिस्टर, अगर आप ऐसे एक ऑडिटर को आप अपने फर्म के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से लिए इनके सर्विसेज लें और इन्हें बताए हुए रास्ते पर चलें, जैसा अमीन भाई और अली भाई इनपुट दे रहे थे, अगर टैक्स स्ट्रक्चरिंग को आप एक्सपेंसेस को क्लेम करने वाले लीगल बाउंड्रीज में रह करके जो कानून है, कानून के तहत आप बचाएंगे, तो आप ये सारे क्लेम्स को लेकर के अपने, एक तो पेपर्स आपके एकदम पक्के हो जाएंगे और सेकंड आपके टैक्सेस बहुत कम कर लेंगे एसएससी होने के नाते। एक और चीज है, किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि मैं मेरे फ्यूल एक्सपेंसेस को मैं बुक कर सकता हूं क्या? आपके फ्यूल एक्सपेंसेस, आपके गाड़ी तक, आपका जो आप गाड़ी खरीदते हैं ना, आपका होंडा सिटी भी आपका बिजनेस एक्सपेंस में जा सकता है। बाकायदा उसको अगर बिजनेस एक्सपेंस में आप बुक करें, उसको स्ट्रक्चर करें, तो उसका खर्चा, उसका ड्राइवर, उसका जो पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस, सारा का सारा बिजनेस एक्सपेंस में बुक हो सकता है। It will come under the perquisite area for salaries, so you can have the entire amount valid bills के साथ में expenses वो claim कर सकते हैं। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, इनके 90% लोगों के बिजनेस हैं, कम से कम ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये लोग अगर ये सारे चीजों को, अगर ये एसेट्स को अगर बिजनेस एक्सपेंस के अंदर बुक कर लें और इसको डाइवर्ट कर दें, तो सारा का सारा एग्जीक्यूशन हो सकता है, इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी ही नहीं, वरना ये सारा पैसा जो है इनके खर्च में जाएगा और ये पूरा डिसअलाउड हो जाएगा और ये सारा का सारा इनकम टैक्स लायबिलिटी बन सकता है। तो ये सारी चीजें सीए जितने बारीकी से आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जब फाइलिंग करने जाओगे उस वक्त उसके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, 50 लोग उसको फाइल करने के लिए बोलेंगे, ये बारीकी चीज में वो जाएगा नहीं। आपको शुरू में ही आपको इसके पास में बैठना पड़ेगा एडवाइस लेने के लिए। आप फाइलिंग के टाइम पे जाएंगे तो इसका कोई उसका फायदा नहीं है, सीए कोशिश करेगा लेकिन आखिर में जाके आप टैक्सेस भरेंगे। So sister, given this scenario, would you suggest that people avail the services of a qualified chartered accountant and spend time on studying the tax structure? जैसा हम लोग आज बैठे हैं सारे फिक्र के साथ में कि टैक्स का स्ट्रक्चर को समझ जाएं, इस तरह एक लेवल पर हम समझ पाएंगे आज। Yes. अगर हम इसकी आदत बना लें कि हम लोग टैक्स के बारे में जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं, जो भी नए पॉलिसीज आते हैं गवर्नमेंट के, उसमें हम जाकर क्वालिफाइड सीए के साथ में बैठ जाएं और उनसे मोटी मोटी बात दरियाफ्त कर ले, देखो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या करना है, अब नया अमेंडमेंट आया, नया अनाउंसमेंट आया है, तो क्या करना है इसके लिए। अगर क्वालिफाइड सीए के साथ में वो एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स एवरी मंथ वो स्पेंड कर लें, उनकी एडवाइस ले लें, थोड़ी सी फीस भी दे दें, तो इनका बहुत सारा फायदा हो सकता है और ये बहुत बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। Yes, completely correct. See, it is always necessary for you to know the financial criteria of your business. तुम्हारे finances कैसे हैं business में, ये तुम्हें जानना बहुत important है. If you have to succeed in your business, if you have to grow, if you have to expand, all these are obviously important factors. तो आप अगर एक बार, अब main होता है क्या, ये जो professional में रहता है client relationship build करना, तो first 2-3 months your auditors, your chartered accountants will understand your business.
they will understand who your regular customers are, who your regular clients are. तो वो basis पे आप उन्हों पूरा तुमना समझाती, obviously not maybe completely, but the importance of what you need to know they will clearly explain you. उन्हों सारे जो returns file करती वो देती, आपकी accounting भी रहता है. इंशाल्लाह मेरा next webinar जो 5th June of में रहता है, then we will discuss a lot about accounting, कैसा तुम्हें account करना हर एक expense को. हमारे president sir भी बोलने को थे, तो everything will be covered inshallah in that webinar also, and हमें सारे exemptions deductions avail कर सकते. अमीन भाई, just to add on to this, आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग शादी के एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं, उसमें भी एग्जम्पशंस लेती हैं बोलकर, मगर हमारे कौम के शादियां में हमें देखती हैं कि एक बहुत बड़ी कार नौशा के लिए आरएस वाले दे देते हैं और वो कार को डिस्प्ले करते हैं, उसको फूल वगैरह लगा के सवार करते हैं, उनकी BMW देते हैं, कोई मर्सिडीज देते हैं, कोई वगैरह वगैरह देते हैं. इसे कैसे टैक्स स्ट्रक्चर में लेकर आए, एग्जम्पशंस कैसे इसके अंदर हासिल करें, वरना ये तो टैक्सेबल हो जाएंगे ना फिर. रफी भाई इसमें और एक ऐड कर सकते हैं जी. कि जो गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि जो पैसा देते हैं शादियों में, ब्लड रिलेशंस को भी जो डोनेशंस वगैरह देते हैं, इसमें ये भी एक टैक्स में आता है यार. Yes, this is our next slide, taxability of gifts. मैं आपकी जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये सब चीजें जो है बहुत चार्जेबल एडवाइस हैं. लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, सिस्टर आतिया इज देयर एंड पीपल लाइक यू आर देयर. आई वुड आल्सो लाइक टू कंट्रीब्यूट. ये जो आपस में जब शादी हो या गिफ्ट वगैरह दे देते हैं एक दूसरे को, मैं आपको एक और एक नुस्खा बताता हूँ जो आसान हो. शादी के दिन दे रहे हो, आप कभी भी दे रहे हो, लेकिन अगर समझो कि आपका दामाद आपका एम्प्लॉय बन गया और आपका पार्टनर बन गया, बिजनेस पार्टनर बन गया, आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसको आपने गिफ्ट किया, ओके, आपने बिजनेस अकाउंट से उसको बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो आप आपको बिजनेस एक्सपेंस में उसको लोड कर सकते, subject to you make him as a part of your business, okay, then he will become. आप भले आप फोटो लो, वीडियो लो, आप शादी में धूमधाम करके उसको मर्सिडीज बेंज दे दो, लेकिन आपको बिजनेस एक्सपेंस में बुक कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू यू मेक हिम एज ए पार्ट ऑफ योर entity. You don't need to make him as your business partner as a whole, even if he is a far related irrelevant connect, मतलब कहीं से एक कनेक्शन होकर भी आपका अगर ये एम्प्लॉय है या आपका एक एडवाइजर है या आपका कंसल्टेंट है या आपका डायरेक्टर है या कहीं ना कहीं आपके बुक्स में आ गया, उसका नाम के बिजनेस में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो आप उसको मर्सिडीज बेंज दे सकते हो, बाकायदा आप उसका एग्जम्पशन दे सकते हो. थैंक यू वेरी मच. यस, सब स्ट्रक्चर करने के ऊपर है. अच्छा, वरना ये शादी के एक्सपेंसेस अगर ऐसी तरह नहीं करेंगे तो अगर नौशा को आरएस वाले समझिए 50 लाख रुपए की कार दिए तो इसका टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? देखो, दो चीजें. अब इस शादी के ऊपर ज्यादा आप अगर ख्याल करेंगे ना तो फंस जाएंगे हम लोग. लेट अस नॉट टॉक ऑन दैट. ऐसा नहीं कि हम वैसे भी अमीन भाई, वैसे भी शादी को फंसती सोचते हो. टैक्स मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चरिंग अलाउड है. तो शादी का खर्च हो या आपका बर्थडे का खर्च हो या एनिवर्सरी का खर्च हो, आपका टूरिज्म हो, तो आपको स्ट्रक्चर पहले से करना पड़ेगा. आप शादी करना एक पर्सनल एक्सपेंस में जाता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर, शादी का पूरा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन पार्ट ऑफ द एक्सपेंस इफ इट इज ए पार्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी, देन वो बिजनेस एक्सपेंस में बुक हो सकता है. ये सब स्ट्रक्चर करना एडवांस में करना पड़ता है, साल के आखिर में नहीं कर पाएंगे. आप ऐसे ब्लैंकेट अप्रूवल मत समझिए कि शादी का एक्सपेंस जो है आप बिजनेस में बुक कर दें. तो IICCB जो ये वेबिनार मंथ ऑफ मई में की है, तो इसका मतलब यह है कि अभी नया साल शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में, और हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं मई में. तो हमारे पास में काफी कुछ वक्त है अगले मार्च तक कि हम लोग सारे साल का फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुलाकात कर लें और सारे साल की प्लानिंग अभी से कर लें, ताकि मार्च में जब हम फाइनल रिटर्न्स बनने जाएं तो हमारे पास में कोई सरदर्द ना हो. ये फायदा है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आपको साल के शुरुआत में ही, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में आप डिस्कस करने का मौका है और इसका भरपूर फायदा आप उठाएं, उम्मीद है. और आपने साल भर का आप प्लानिंग कर लें तो माशाल्लाह आप बहुत कुछ इसके अंदर हासिल कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह. साल भर का. और एक चीज आपको एक बताना मैं लाजिम समझता हूँ इस वक्त, आपके जो GST हैं, आपके जो टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस हैं या GST हैं, अब जिस तरीके से आज की तारीख में जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, क्विकली GST आपका डिडक्ट हो जाता है. आपको हर महीना इसका कैलकुलेशन करके इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट लेना है. अगर समझो आपके पास, अगर समझो आपने 1 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन किया है, जिसमें आपने अगर समझो 25 लाख रुपया का आपने
माल खरीदा है और 75 लाख का आपने माल बेचा है, तो लेन देन के वक्त जो है आपके यहाँ जीएसटी का सरप्लस हो सकता है। उस सरप्लस को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आउटपुट क्रेडिट रहता है। लेकिन आप जब फाइलिंग करने के बाद जाके मांगेंगे आपको फायदा नहीं होगा। तो पहले से स्ट्रक्चर करना है, हर महीने के आखिर में आपको रेसिप्ट वगैरह बना के इनपुट क्रेडिट और आउटपुट चेक करके कितना फायदा हो रहा है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से आप जीएसटी टैक्सेस को भी बचा सकते हैं। आउटपुट क्रेडिट को अगर सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें, इनपुट क्रेडिट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसको बैलेंस करें, और जितना सरप्लस है हर महीना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाकायदा, लेकिन महीने के हर महीने में उसको अकाउंट करें, क्योंकि जीएसटी का बहुत बड़ा रकम जो है आपके पॉकेट से जाएगा, आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। माशाल्लाह, इतने बारीकी के साथ में हम लोग आपके सामने ये सारी बातें रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएं और आप इसे फॉलो करें। और जो भी स्लाइड्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, IRCCB की तरफ से आपको ये स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप ये स्लाइड्स को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे और आप इसका फायदा उठाइए। और अगर आपको पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में अभी से प्लानिंग करना है, बिजनेस को स्ट्रक्चरिंग करना है, अपनी फैमिली के टैक्सेस को स्ट्रक्चरिंग करना है, तो हमारी ये गुजारिश है कि ज़रूर ब-ज़रूर आप एक CA के पास में जाएं, क्वालिफाइड CA के पास में जाएं और उनकी थोड़ी फीस होगी वो फीस दे दें। आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अपनी बिजनेसेस आप टैक्स अप्लायंस में लेके आ आएंगे। और हमारे सिस्टर अतिया जो हैं यही फील्ड में हैं माशाल्लाह, कौम की एक होनहार नौजवान लड़की जो ये फील्ड में बहुत मेहनत से आगे बढ़ी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि CA पास करने वाले बहुत कम होते हैं। ये CA की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, मेडिकल साइंस से भी, अब बोलते हैं डॉक्टर की किताबें देखिए इतने मोटे रहते हैं, उससे भी ज्यादा मुश्किल CA का कोर्स होता है और इनकी इतनी कड़ी मेहनत होती है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, गवर्नमेंट से फिक्सेशन रहता है कि इतने ही परसेंटेज में CA पास होंगे इस साल। वो ब्रैकेट को छोड़ के नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि वो इस बार ज्यादा हो गए, इस बार कम हो गए। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कि इतने परसेंटेज ही CA पास करेंगे, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। मैंने सिस्टर अतिया से डिस्कस करते हुए ये बात को जाना, अगर वो 4 सब्जेक्ट में अपीयर होते हैं अपने प्रीलिम्स में, तो अगर एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं और 3 में पास होते हैं, CA का रूल ये है कि वो 4 में भी फेल हो गए। मैं बात आपको रिपीट बताता हूँ, 4 सब्जेक्ट को अपीयर होते हैं एक स्टूडेंट, और CA के कोर्स में बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में फेल होकर 3 सब्जेक्ट में पास होते हैं, तभी भी उनको फिर 4 सब्जेक्ट के एग्जाम लिखना है, वो चारों में भी फेल हो गए। इतना कठिन है CA बनना। वो काम को हमारे सिस्टर जो हैं अतिया अपने जिम्मे लिए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। और आपको फख्र होना चाहिए कि कौम के अंदर ऐसे टैलेंटेड लड़कियां हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करके भारत देश के लिए टैक्सेस के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके देश की उन्नति और आपकी उन्नति के लिए एक फायदेमंद सिटीजन साबित हो रहे हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ दिस सिस्टर एंड देन वी रिक्वेस्ट कि बहुत सारे लड़कियां और लड़के जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चा CA बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिस्टर अतिया से आप व्हाट्सएप के दौरान, व्हाट्सएप ग्रुप के दौरान उनसे इंटरेक्ट करें। आपके बच्चे भी आगे बढ़ करके CA बनेंगे तो इतनी इज्जत अल्लाह ताला देगा और इतना पहचान मिलेगी और इतना लोगों को आप सर्व कर पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। With Thank this, you we're going so to, much. you're most welcome. You completely deserve it. With this, according to our time and the minutes of the webinar, we are getting into the last topic of today's webinar, and then we will have the last question and answer session at the end of the 30 minutes. So we are now starting a new topic for next 30 minutes. Please put your questions onto the chat box, and Ali Bhai will pick and select, and we can definitely go ahead and answer those questions. Yes. So as briefly we were discussing about the set of carry forward of losses, and in case of gifts and everything, all the slides were roughly discussed. Finally, I will throw a light on the prosecution and punishment under the income tax law. So a very important slide for us to know what happens in case when you're not filing your ITRs, or in the cases where you're not paying your taxes, not doing the proper accounting, or not getting yourself registered. So as we can see that there is an imprisonment for up to a period of 2 years, and also you might have a fine which can go up to 25 lakh rupees. It becomes a compoundable offense. तो क्या होता है, आपको जेल जाने की भी नाउज़ुबिल्लाह वो भी एक सीन हो जाएगी, और आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे 25 लाख तक। तो ये सब अवॉइड
करने के लिए it is always advisable so that you file your returns on time, you have the proper books of accounts in place, and you get yourself registered if your turnovers are crossing the threshold limits. So another very, very important topic before I close the subject of income tax is the income tax return itself. So income tax return is nothing but, as I discussed, it is a form you will have to fill stating all the sources of your income. आपका salary हो या business profession हो या property हो, कुछ भी हो, आपको इस returns में बताने होंगे. इसके benefits बहुत सारे हैं. अगर आपको कोई loan लेना है, अगर कोई visa processing, medical expenses आप claim कर सकते हैं. अगर आपका कोई loss था, जैसे कि हमारे president साहब बोले, अगर कोई भी losses ही हमें उसको carry forward कर सकती without pay any taxes. And also in the very beginning of the session, Dr. Rafiullah Beg sir had spoken about how he gets the email of being a very good taxpayer. So all these are some kind of good benefits that makes you different from the others. Then we have the different ITR forms. So if we have to discuss, we see there are ITR 1 for all your salaried persons or your house property, ITR 2 for capital gains, 3 for business press, other than your ITR 2. Then we have ITR 4, presumptive income. As I had mentioned earlier, अगर तुम्हें estimated basis पर tax pay कर ले कोई, तो ITR 4, ITR 5 firms के वास्ते, ITR 6 companies के वास्ते, ऐसा तुमना different forms ही. इसके due dates ही 31st July ITR 1 के लिए है, 30th September ITR 4 and 3 के लिए है. तो अब हमें we are moving towards the closure of the filing of your ITRs. So you can quickly call up your tax experts, your auditors, your chartered accountants, and they will help you file your income tax returns. As we have clearly discussed about your income taxes, your TDS, deductions, everything will be taken care into this. Few important points like advance tax. Agar aapka tax, if you are liable to pay tax in lakhs of amounts, you will have to go with the concept of advance tax. मतलब आप एक estimate basis पर, say for example 10 लाख का business शुरू कर रही, 15% profit है, 1.5 लाख रुपए तुम्हें tax pay करना, तो तुम्हें क्या कर सकते हैं, इसे 4 quarters, like we 3 months make 1 quarter, Jan, Feb, March. So हमारे जो 4 quarters ही हमें 15th of every quarter से पहले advance tax pay कर सकती है. इसका क्या फायदा है, तुम ना end में एक lump sum amount में tax pay करने का headache आपके सर पे नहीं रहता. Then as we have seen, TDS, what is TDS? TDS simply means a tax which is deducted at source. जहाँ पे आपकी income है वहाँ TDS deduct होता है. तो a lot of business people come up to me with the queries of madam हमारा TDS deduct आगा, full amount नहीं आपको है. So all these what you can do is you can claim the refund by filing ITR. There are different sections. For salary 192, TDS on salary. Earlier we had questions asking about form 16, form 26 AS, all that will be covered on TDS on salary. 194H, अगर कोई commission या brokerage ले रही तो 5% तुम्हारा TDS deduct होता है. मतलब suppose I have to earn 1,000 rupees as my commission, then 5% of it will be deducted and then I'll get 950 amount as my TDS. Then we have rebate. So rebate, I had told, rebate is nothing but a discount which is given. So when you are a resident individual and आपकी income 5 लाख रुपए तक की है, तो आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं पे करना, आपको डिस्काउंट मतलब रिबेट मिलता है इनकम टैक्स की तरफ से. फिर हमें डिडक्शंस भी देखे, ATC, ATD, ATE, all these are the different deductions which we can avail a benefit when we are filing our ITR. So moving forward, let's start with the different rates of taxes. तो earlier क्या था, हमारा finance act हमने सिर्फ existing slab rate दिया था. बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख रुपए. अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%. दीज आर कॉल्ड योर स्लैब रेट्स. तो ये हिसाब पे तुम्हें टैक्स पे कर ले को थे एंड तुम ना डिडक्शंस भी मिलते थे बाकायदा, जैसे कि LIC का हो या आपके पास मेडिकल बिल्स ही, अगर आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट ही जो डिसेबल्ड होकर रहती एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस, वो भी आपको उसका एग्जेम्पशन ले सकती हैं, आप उसका डिडक्शन ले सकती. लेकिन अब रिसेंट हमारे फाइनेंस एक्ट में क्या आया चेंज, 115 BAC, that is they introduced this stating the lower rate of taxes. तुम्हारे taxes कम होती but तुम ना deduction नहीं मिलता. Obviously we can't have both on the plate. We either have less taxes or no deductions. तो what did the government come up with? तुम्हें tax pay करो, less rate पे pay करो, लेकिन deduction क्या भी नहीं लेना. तो वो हिसाब से वो भी मैं rates हमारे slide में डाल रहा हूँ. You can go through later for the references.
Let's start with the most interesting and one of my beloved topics, which is GST. So before GST, we had a lot of taxes like excise, VAT, entertainment, luxury, etc. So all that was subsumed by one tax, that was our GST, goods and services tax, which came up in India for 1st of July 2017. It has helped a lot of business people to understand their business, to pay taxes regularly, and it has given a lot of growth to our economy. Our GDP grew as well. तो जो है हमारा वैट एंड जीएसटी कॉम्प्रहेंसिवली हमें दो भी इंटरचेंजेबली हो को पे कर सकते. So what is GST? GST is basically an indirect tax that you pay for the manufacture of goods or rendering of services. Simple. अगर आपका बिजनेस 40 लाख के ऊपर के टर्नओवर में है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं तो आप वॉलंटरी जीएसटी भी ले सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, अब अक्सर क्या होता है, तुम्हें हर जगह बिजनेस करो, द फर्स्ट थिंग दे विल आस्क इज आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है क्या. तो क्या होता है, जब आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, जो भी तुम्हें परचेज सेल करती है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग आपके पास रहता है एंड उसका तुम्हें आईटीसी भी क्लेम कर सकती है. अद्विया के पास दिस इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट दैट दे हैव कि हमें जीएसटी पे कर डालती है, हमारा पैसा चले जाता है. नो, यू कैन क्लेम दैट एज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. यू कैन इजीली क्लेम दैट बैक. You can set it off with the sale that you make. So what happens is GST will prevent cascading of taxes by providing a comprehensive input tax credit mechanism. In simple term जो मैं समझे तो मैं input tax credit claim कर सकती हूँ. हमारे president sir also भी उन्होंने भी mention करे थे कि हमें जो भी हमें purchase sale करती we can have the input tax credit claim. How? By filing your monthly or quarterly returns. तो GST registration बनाने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल अग्रीमेंट are few documents that you have to give. Once you get the GST number, according to your rule 45A amendment, it is mandatory कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी तुम्हें सबमिट करना. Because why? The department wants to know what are your transactions. तो जो भी आप अकाउंट इस्तेमाल करती हैं बिजनेस के लिए, आपको वो देना पड़ेगा पोर्टल में. दे विल सबमिट द सेम. अगर आप वो बैंक डिटेल्स यू फेल टू डू सो, देन दे विल आल्सो कैंसिल योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव वन प्रॉपर बिजनेस अकाउंट. एक प्रॉपर, अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हैं तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए और वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल होगा. So we go with the concept of one nation, one market and one tax. It was clearly encouraging Make in India policies and a lot of people were aware of whatever is the purchasing. तो अगर आप परचेज करें तो किसी और के वास्ते वो सेल होता है, तो जब उन्होंने फाइल करती आपके भी पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट होता है एंड यू कैन क्लेम दी इनपुट टैक्स फॉर दैट. So a little example of what is a composite and a mixed supply. तो आपके ऊपर टैक्स पे करना लायबिलिटी बहुत जल्दी अराइज होती है, either at the date of invoice or when you're rendering service, whichever is earlier. That will come under the time and values of supply. So if I have to talk about supplies, now say for example, one of the persons, Mr. X, he goes to purchase a phone. He goes to purchase an iPhone. So an iPhone will cost somewhere around ₹1 lakh. Now what happens is the iPhone has come up with the policy of not giving the charger with your phone. You have to pay separately for the charger. I think somewhere around 3,000 to 4,000 rupees you will have to pay for the charger as well. So now the question arises, do I have to pay tax separately on phone and separately on charger? No. What comes there is composite supply. That is, you cannot use phone without a charger. Of course, तुमना charger की जरूरत है phone के साथ. So that will come under composite supply and you will have to pay tax together. In total, you will have to pay 18% का tax जो भी है. But talking about your mixed supply is consisting of two or more things together. Like say for example, you're packing a gift combo of chocolates, candies, sweets and balloons. That will come under mixed supply and you will have to pay taxes on that separately, individually. So the tax liability shall be the rate applicable to the supply that attracts the highest rate of tax. So जो भी commodity का highest tax rate रहता है वो उसके ऊपर तुम्हें tax pay करना लाजमी होता है. Then we have the levy of GST, as we have CGST, SGST, UTGST and IGST. So C&S is applicable when intra-state supplies are happening. Say for example, you're dealing only in Karnataka. So within the state, it is CGST. Outside the state, outside our country, you attract IGST. So there are a few levies which are not under the purview of GST.
So GST, like for example, alcohol, liquor for human consumption, petroleum, crude, high speed diesel, aviation turbine fuel, all these are not applicable under the GST. So the maximum rate of your CGST, SGST will be 20, IGST will be 40%. However, according to your businesses, what kind of business are you in, they will see your HSN code as well. So that is a harmonized nomenclature that they have given, wherein a particular HSN code is given for each type of the commodity that you will be dealing in, and applicable taxes will also be mentioned for you. Then we have a concept of composition scheme. So what happens in a case of composition scheme? Composition scheme is nothing but wherein you pay taxes at a lesser rate. आपके rates of taxes कम होती. Say for example, अगर आप manufacturer ही और trader ही, आपका rate 0.5% C&S रहता है या 1% IGST रहता है. अगर आप restaurants without alcohol, like normal restaurants जैसे कि we have Empire, Imperial, so many other restaurants which do not serve alcohol, for them it will be at 2.5 or 5%. When can you pay GST at a lower price? Of course, when your turnover is less than or equal to 1.5 crore. तो आपके composition, there is one regular tax pay. रेगुलर टैक्स पेयर में क्या होता है, तुम्हें नॉर्मल जीएसटी नंबर ले लेती, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर ले जाती, एंड जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं, से फॉर एग्जांपल 18% है, 12% है, तुम्हें उसके ऊपर पे कर ले को जाती. बट इन द केस ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होता है, तुम्हारे टैक्स रेट्स कम होती only when your turnover is less than or equal to 1.5 crore. But there are few conditions for that if you have to take up composition scheme. First is you cannot collect the tax from your customer, and you guys do not give a tax invoice, rather you give a bill of supply, and you cannot claim any input tax credit for that, and you will have to file your returns under CMP4, composition 4 quarterly returns रहती हैं तुम्हारे, तुम्हें वो हिसाब से फाइल कर ले को जाना उसके वास्ते. So there are pros and cons in every way. So the best what we can advise is, once you go to the auditor, you can explain your entire business, what are your plans, what are your strategies that you adopt, and they will tell you whether you can go for the composition or for the regular tax paying scheme. So I have given the slide wherein businesses which are not eligible for composition of goods and services, you can go through that later. Then we have the concept of claiming the input tax credit. So earlier we were discussing about the input tax credit. Say for example, there is a registered, who is the registered person? A person who gets his GST done. So any person who has a GST registration is called as a registered person. So he will take the credit of taxes paid on inward supplies of goods. For example, I go to purchase a particular good, a commodity, which will cost me ₹1 lakh, and I will pay 18% GST on that, 18,000 rupees. So the total cost of the commodity comes up to 1,18,000. So ab jo hai 18,000 is my input tax credit, and I will use that particular commodity in the business. Say for example, ab mera Burkhan ka store hai Atfa, to ab mai kuch purchase kari and I use it only in the business, only in my store. Then I have fulfilled all my condition and I can claim the ITC for the same. Now, for that, I will have to file my returns monthly or quarterly. जो भी हिसाब से हमें फाइल करने को जाती, अगर आपको मंथली चाहिए, आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, you have a good number of transaction that you keep doing, then it is advisable you take the monthly GST filing. Nahi tumhara hota hai, like you're still in the introduction stage of the business, so you can go with the quarterly accounting, quarterly filing of your returns as well. So it is completely at the option of the taxpayer ki tumhe monthly file karna cha rahi returns tumhare ya quarterly file karna cha rahi returns, it will be at your discretion. So we will have to file our returns. तो ये क्या होता है, अगर आपके returns आप फाइल नहीं कर को रही तो उसके भी बहुत heavy penalties आपको देने पड़ेंगे. That I have covered in the next slide. Then tax on such supply has been paid either in cash or ITC. तो ये जो tax तुम्हें collect कर को ही, and the person to whom you have to give the goods has received, and he also has a valid tax invoice. A valid tax invoice is basically called as a debit note. तो आपके पास वो invoice है, वो चीज का, वो good का. तो I can claim this ITC up to the 20th of October of next financial year. That means in a layman's language, you have a period of 1.5 years to claim that input tax credit. We need to ensure that you file your return and you claim this input tax credit.
Sister, there is a question here. Can a service tax can be claimed as the input? Can you enlighten on that? Is the product- Usually not. If the president could help me on this question. See, service tax maximum, what happens that you do have a provision. If you have got a service availed and service given, both side, if you have a surplus, there is a provision also to set off, okay, the tax element. The set off is always allowed in any kind of tax bracket, subject to you have a surplus of, availing service taxes. Only then you can make that kind of, provisions. It's possible. Okay. See, So all the we'll taxes be moving to which the are last. all the taxes which are paid end of the day, it will mount to a tax payment to the authority which you have made. It will, in the books of account, it shows that it was paid as a taxes. So you will also have a input credit of all those taxes. You can categorically put those input credit aside, and then you can avail the benefit of input credit in all taxes wherever there is a possibility. That's how the loss carry forward loss benefit also we get in income tax. We also get a GST input credit. We also get in various other than the taxes like customs, the taxes which are paid to to those kind of direct payments, like when we spend our money outside our circles. So those cannot be availed. But there are categories wherein you can take an input credit and it falls under that criteria. If there is a surplus, then you can avail those benefits. I have got, I would like to also bring it few things to your notice. See, earlier what we used to do is, especially the small shops, grocery shops owners or the restaurants, the hardware stores, especially in our community, we have a lot of hardware stores. What the people used to do, they have a practice of not issuing a real bills, original bills to the client, because they do collect the money by cash, and even now they sell the goods by cash, and they use the bill books. End of the year they used to make dummy bills also. This is a practice, unorganized sector understood. So all those practices we need to avoid now, because all this transaction now it is being taken into consideration because of the digital economy world. No matter how much you have got the cash component in your hand, end of the year, if the transaction cross your earning, then you will be liable to pay the taxes. You will come under scrutiny. Therefore, it's very important that the bad practices which we were all using in the past by creating dummy bills and declaring less sale taxes, which will not be effectively can be used nowadays, because in future all those transactions. चलो मैं उर्दू में बता देता हूँ. नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो हमने छोटे मोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, वो लोग जो है बिल जो है फाड़ते हैं और उसका जो है हिसाब किताब जो है ज्यादातर जो है कम दिखाते हैं. तो अगर 100 रुपया का बिजनेस होता है, जो 1 लाख का बिजनेस होता है, तो 20,000 25,000 का बिल जो है हम फाड़ते हैं. 75,000 जो है हमारे पास नकद बच जाता है. तो ये 75,000 रुपया जो बचता है, ये हम कैश में ले लिए, या अगर जो ट्रांजेक्शन हमने कर लिया हमारे पास रख लिए, तो किसी वजह से हमने बैंक में डिपॉजिट किया और उसके बाद उसमें जो है हमने डिजिटल पेमेंट में हम इस्तेमाल किए, गूगल पे या फोन पे में अगर इस्तेमाल किए, तो ये 75,000 भी इसके साथ में मिल जाता है. आपके साल में अगर आपने 25,000 रुपया का अगर महीना बिजनेस किया है, तो आपका 3 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन होगा. 3 लाख के ऊपर तो आपके पास पैसे है नहीं. आप अगर समझो 10 लाख का ट्रांजेक्शन किए हैं बैंक में, और आपने मोबाइल पेमेंट या फोन पेमेंट, या अगर आपने दूसरे गूगल पेमेंट में, तो आपके जो 7 लाख 8 लाख रुपया जो एडिशनल हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाए. इसीलिए बहुत जरूरी है कि पूरे डिजिटली जो ट्रांजैक्शन आज हो रहे हैं, क्योंकि आप रोक नहीं पाएंगे इसको. आज 70% ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है, कल 80% होगा, फिर स्लोली ये 90% हो जाएगा और 100% भी हो सकता है. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अभी से तैयार कर लीजिए अपने बिजनेसेस को. जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के हिसाब किताब अपने बैकएंड में रिकंसाइल हो जाए हर महीना. साल तक इंतजार मत करिए, वरना आपको 2 तरीके के नुकसान है. एक तो आपके पास इनपुट क्रेडिट रहेंगे, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, उसका एक नुकसान है. दूसरा एक नुकसान है कि साल के आखिर में आप इकट्ठा करके उसको अगर आप समझो कि कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सीएस हो या कितने भी बड़े पंडित हो या एक्सपर्ट हो, आपको इसमें आपको वो हेल्प नहीं कर पाएंगे. आपको टैक्स लायबिलिटी बना देंगे, या तो आपको पेनाल्टी में आपको शामिल हो जाएगा. आपके पास अगर पैसा अगर जमा हो गया, तो अनवांटेड पेनाल्टी आप. Yes. Perfectly what our president sir was talking about the same. I would like to add a few points that sale tax was abandoned once the GST got into picture. So when we talk about GST, we can claim only the ITC of the GST that we have paid.
So if there are some technical queries, you can surely contact your tax expert, or you can contact me as well. Inshallah, I'll clear your query in a way if you have not understood the same. So let's move forward with the filing of our returns, which is going to be the last topic. So yes, once you get the GST registration done, you have to file your returns duly. It becomes your responsibility or your duty. You can consider the same to get your returns filed. So there are GSTR 1 and 3B, two normal returns any person should be aware of to file the same. तो ये तुम्हारा मंथली भी हो सकता है जैसे मैं मेंशन करी, या क्वार्टरली भी हो सकता है ऑन ऑल योर आउटवर्ड सप्लाईज. जैसे तुम्हें अगर कोई भी सेल कर रही तो तुम्हें GSTR 1 फाइल करना है. रेगुलर स्कीम भी हो सकता है आपका, या कॉम्पोजिट स्कीम भी हो सकता है. कब फाइल करना? बाय 10th of every month मैक्सिमम 10 तक तुम्हें फाइल कर देना. अगर तुम्हें 11th की रात भी उठा को GST फाइल करने बैठे तो तुम्हें नेक्स्ट जब 3B फाइल करती तो मिनिमम 500 रुपए पेनाल्टी लगते रहता है. वो वन टाइम यू हैव फॉरगॉटन, इट्स फाइन. 1 or 2 times it is okay, but when you forget for a longer period of time, minimum of 500 rupees you will have to pay as penalty. There have been a lot of clients who came up to me stating ki our auditors have not filed the returns for so and so period, and they had no way apart from paying the taxes. So I am a person who strictly follows the rules, and I make sure that everybody with me follows it. So I made sure that they paid all the fines and penalties, and now they are clean. And I told moving forward, inshallah, we will send you the reminder by 7th or 8th, and we will look after the filing of the return. So it is very important for you to duly file your return so that you avoid the unnecessary penalty. 500 रुपए भी क्यों? किसी का पेट भर सकता है, या किसी के लिए 500 रुपए is, it is equal to 5,000 rupees. Why should we let it go just like that by the ignorance of time? So हमारा 1 जो है इट विल कवर ऑल योर सेल्स. 3B जो है पूरे तुम्हारे परचेसेस. 3B फाइल करने 28 तक है. अब रिसेंट हमारा जो लास्ट मंथ का फाइलिंग था वो 24 तक उन्होंने हमारा डेट दिए थे फाइल करने के लिए. तो हमें 3B भी फाइल कर को जो भी तुम्हारा सेल है वो दिखा सकती. कोई भी अगर टैक्स पे करना हो और आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कर को रहता है तो उसमें पूरा आपका इनपुट जो है वो डिस्प्ले करता है. तो अगर कोई एक्सेस आपको पे करना हो तो वी कैन मेक यू पे. इफ नॉट वी can set off with the same amount whatever you had in your balance. Then we have GSTR 4. It is for your composition taxpayers. Then we have GSTR 5, monthly return for a registered non-resident taxpayer. He is an NRI and he is conducting a business here, so he will come under the rate of GSTR 5, wherein he will have to file the returns by 20th day of next month or within 7 days after the expiry of registration. Then there is GSTR 9. So 9 is a summary of all your returns, summary of all your purchases and sales that you made in one financial year. तो यहाँ क्या होता है आपका एक annual return, एक पूरा साल का आपका जो भी picture था, what was your position in 1 year in the perspective of tax will be given. So by 31st of December, you will have to file that GSTR 9. Not compulsory unless you have crossed the threshold limit. Usually the threshold limit is accrued, but if you have not crossed, but if you want an understanding of the same, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना टैक्स पे करिया, कितना मुझे टैक्स आया, कितना मेरा इनपुट क्रेडिट है, तो उसके लिए आप GSTR 9(9)(c) फाइल कर सकती. GSTR 10 है फाइनल रिटर्न, जो होता है कैंसिलेशन की वजह से. मैं ऑलरेडी बताई थी, अगर आपका बैंक अकाउंट सबमिट नहीं करे, बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं करे, तो आपका GST कैंसिल हो सकता है. या अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जब उन्होंने वेरिफिकेशन को आती, किसी का रेंटल अग्रीमेंट रहता है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल रहती है, all these are something fictitious, something which is fishy. So what we have to do is we have to avoid such things. When the officers come for a physical verification, they will look into all of your documents, and if any of the document is not correct, or if you have deceived the government, then obviously they will catch you, you will be penalized for the same, and you will also have a cancellation of GST. So it is very, very important for us to abide by the rules so that we are aware of whatever is happening in the economy or in your own business. The first thing is, let's start at the home. Let's start now. If you have to make the change, you have to be the change in the country. So I'm not telling everybody that immediately you start paying lump sum amount of taxes. No, even I understand. What you can do is pay the minimum liability of taxes, whatever is applicable for you. Agar aapke paas bills hain, now that we are coming into the webinar, I'm sure a lot of
of people are aware of the amount of exemptions we have, number of deductions. These were at least the important ones that I covered. But if you come sit with me, talk to me, or talk to any of your other tax expertise, they will give you an ocean of knowledge which is really with them, and they will help you to file your tax returns in a very, very better way and effective way, so that you minimize your tax liabilities, structured it in a very legitimate manner. Exactly. I would like to add one line here. Sister, as you rightly said, once again, I repeat, tax filing is not necessarily you are going to pay the taxes. Yes. Okay, please declare the actual scenario. Your taxes are applicable only if you have got income. If you don't have income, you will get a input credit benefit. आपको नुकसान हो जाएगा. आप अगर टैक्स अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपके पास बहुत सारा इनपुट क्रेडिट जमा रहेगा, जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा. आप इसलिए आपसे गुजारिश है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें. ये इससे आपको फायदा होगा. और एक चीज आपको बहुत जरूरी समझना है, जितने भी लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है. इस चीज को आप जानकारी के लिए मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह. देखो, जो भी आप बिजनेस आप बढ़ाएंगे आगे चल के, आप अगर एक्सपैंड करेंगे, आप अगर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बुक करेंगे या कोई बड़ी कंपनी के साथ में, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या गवर्नमेंट के साथ में आप डील करेंगे, तो आपके मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे? आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, आपके टैक्स सर्टिफिकेट्स, आपके लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न फाइलिंग सर्टिफिकेट. दे वांट टू नो योर टैक्स रिटर्न. दे विल नॉट आस्क यू हाउ मच प्रॉफिट यू हैव मेड. आपने टैक्स भरा है, नहीं भरा है, आपके पास टैक्स फाइल किए हैं, नहीं किए हैं, ये चीजों के लिए आपसे मांगा जाएगा. अगर आपके पास ये 3 साल के फाइनेंशियल्स नहीं है, तो आप कोई टेंडर बिड नहीं कर पाएंगे, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं पाएंगे, कोई लिमिटेड कंपनी के साथ में डील नहीं कर पाएंगे, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में डील नहीं कर पाएंगे. अब छोटा मोटा बिजनेस आप ही के अंदर आप कारोबार कर सकते हैं, आप बड़ा कभी नहीं बन पाएंगे. इसके लिए आपका टैक्स रिटर्न फाइल करना, आपको इसका यह मतलब नहीं है कि आपको टैक्स भरना है. रिटर्न फाइल करिए. आपकी अगर बुक्स तैयार है, रेडी है, तो आप अपने एक्सपेंशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि अभी वेबिनार का खत्म होने का वक्त आ गया, तो और कुछ चीजों के बारे में बता देता हूँ कि अगले सेशन में इंशाल्लाह वी विल कवर द वेल्थ, वी विल कवर योर गोल्ड, वी विल कवर योर प्रॉपर्टी, वी विल कवर ऑल दोज assets which you are actually having, including we will talk about the Ponzi schemes. जो पोन्जी स्कीम्स को कैसा बनाया जाता है वो धमाकेदार है इंशाल्लाह. आप लोग बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि हमारे कौम में वो फेमस प्रोडक्ट है. सारी कौम जो है उसके लिए जानना चाहती है कि भाई ये पोन्जी स्कीम बनाया कैसे जाता है. तो इंशाल्लाह इसका तरीका और इसका जो पोन्जी स्कीम का जो असल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार में आपको बताएंगे. और आपका सोना आपके पास जो जमा है, आप उस चीज को अगर सही तरीके से अगर उसको स्ट्रक्चर नहीं करें, तो कल के दिन वो सोने के ऊपर भी आंच आ सकती है. तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है. तो डॉक्टर साहब, आई विल हैंड ओवर टू यू. इफ देयर इज एनी क्रूशियल क्वेश्चंस, प्लीज टेक इट. Yes, रिक्वेस्ट आया है. Ali bhai can proceed. Yes. Yes, thank you, डॉक्टर सर. नहीं, एक रिक्वेस्ट ये आया है कि एनआरआई और एनआरओ टैक्सेस वो भी आप कवर करने का रिक्वेस्ट है नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, इंशाल्लाह we'll cover that. Okay, now sister, as we are coming to the last part of Q&A, generally as people are going through all their tax liabilities and assets and all that, what would be your personal advice on those people who have plans of investment in land in particular? क्योंकि हमारे कौम में ये एक आदत है कि पैसे आते ही क्या करना, जमीन ले लेना, नहीं तो सुन्ना ले लेना. जमीन सुन्ना दोनों को फोकस करते हैं, और उन्होंने समझते हैं कि जमीन में टैक्स बच जाता है, मालूम नहीं होता. सुन्ना लिए तो टैक्स बच जाता है, मालूम नहीं होता. दूसरे कांते भी लिए तो हम ना टैक्स आता है करके बोल के एक रॉन्ग नोशन है. So how do you want to suggest people to go about this? See, my personal advice is investment in gold bars is a very good choice, not in gold. जो तुम्हें गोल्ड खरीदती, अगर अल्लाह ना करे आपके पास कोई इमरजेंसी है, तुम्हें सेल करना, you won't get the full returns. उसमें GST कट होता है, मेकिंग चार्ज कट होता है, स्टोन कट होता है. तो it is better to buy the gold bars as your investment. Then talking about your properties,
Investment in properties is a very good idea, I personally believe. Why? Because it will also give you a lot of exemptions from the taxation point of view. As we remember, मैं आपके साथ एक slide share करी थी, अगर आपके पास कोई cash है या आपके पास property है, आप amount of exemption claim करना तो क्या कर सकती, immediately within 1 year you purchase another property or you start constructing another property within 3 years. तो आपको क्या होता है, exemptions उससे मिलती and आपके taxes भी कम हो सकते। एक स्पेशल क्वेश्चन आया है, और माँ बाप जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके बच्चे जो आगे चलकर प्रोफेशनल कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, ज्यादातर हमारे कौम में इंजीनियर और डॉक्टर नीट या सीईटी 2 कंप्लीट कर लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट बल्कि समझते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर स्ट्रीम्स लाइक योर्स सीए। तो सीए बनने के लिए बच्चों को कहाँ से तैयारी करना है और क्या क्या करना है, 10th स्टैंडर्ड के बाद में उनको कौन से स्टेप्स लेना है, जरा आप इसके ऊपर हाईलाइट कर देंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक मार्गदर्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। Yes. So if I have to say, CA is a very beautiful, knowledgeable course. Of course, there are many, but CA is one among them. If you want to gain a lot of knowledge in every field, तो मैं जब CA का exam लिखती, you're not only an expert in tax, you will also know about accounting, you will know about law, you will know about corporate, you will also know about the information technology, auditing, strategic management, business planning. So basically, when we look at a CA, we assume him to be, rather we expect him to be a person who knows everything. तो अगर आप जब CA शुरू करना जर्नी आपकी, you will have to start after 12th. आपका सेकेंड पीयू में आपके कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस के बैकग्राउंड्स भी रहती हैं, बहुत सारे जो साइंस कर को इमीडिएटली दे वांट टू शिफ्ट टू कॉमर्स। आई पर्सनली हैड माय अकाउंटिंग सर दीपेश सर जो साइंस बैकग्राउंड से थे, बट उनका क्या इंटरेस्ट आया, ही सडनली टुक कॉमर्स, ही डिड हिज ऑडिटिंग एंड ही डिड इनटू हिज इंटर सीए एंड ही वाज अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोफेसर एंड साइंस बैकग्राउंड से भी रहती। तो एक बार अगर आपका 12th होगा, जैसे आपका नीट है, सीईटी है, वैसा एक सीए का एंट्रेंस एग्जाम रहता है, सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम 3 months की ट्रेनिंग होना। तो सीए फाउंडेशन करके रहता है, वेरिन यू विल हैव लैंग्वेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इंग्लिश, टैक्सेशन, लॉ, मर्केंटाइल लॉ, 4 subjects you will have। तो आपकी प्रिपरेशन के बाद आई थिंक 400 मार्क्स का वो पेपर था, जब मैं लिखी थी इट वाज 200 मार्क्स, लेकिन अब वो 400 मार्क्स का है एंड यू हैव टू गेट मिनिमम ऑफ 50% इन दैट। तो इंशाल्लाह वंस यू टेक दैट then you will have your CA intermediate, तो जहां 8 subjects रहती, divided into 2 groups as our Dr. Bhai had told, if you fail in one you fail in all of it. It was my personal experience, honestly speaking. So I had failed just by one mark in both the papers and I was so disheartened that I actually thought I'll give up on CA, but all thanks to Allah subhanahu wa ta'ala and one of my professors who motivated me to restart my journey of CA. So क्या होता है, failure is a step to your success, you have to take that as in your CA। तो अक्सर ऐसा रहता है, लोग पूरे टॉपर्स रहती एंड उन्होंने आपको CA में फेल होती। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर इन माय स्कूल, इन माय कॉलेज एंड एवरीथिंग। सो व्हेन आई फेल्ड इन CA by just that one mark in both subject, I was so disheartened, but later on I got to know the reasons of my failure and it was first step to my success, alhamdulillah। तो आप वो लिखे के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप रहती है, जो करेंटली इवन आई एम परस्यूइंग। तो आर्टिकलशिप करे के बाद आपका CA फाइनल रहता है, जो इंशाल्लाह you can call yourself to be a chartered accountant. I'm looking forward to a lot of people inshallah to enroll for the CA course and we all can help each other, motivate each other in studying, and inshallah of course if you need any guidance, any career guidance, you can contact me. Along with CA there are other courses also, CPA, cost accounting, ACCA, other courses as well you can do. CS is also a very good course, company secretary. So yes. Jazakallah khair, sister. We are really proud of your achievements when we wish, as you have wished yourself, that we see more and more people from the community coming out as chartered accountants. एक interesting बात जो लोग पब्लिक में पूछना नहीं चाहते मगर मैं आपसे पूछने की जरूरत करता हूँ कि हम उमूमन जानते हैं डॉक्टर कितना कमा लेता है, उमूमन जानते हैं कि इंजीनियर की कमाई यहाँ तक हो सकती है। आप नंबर्स की बात कर रही हैं, आप टैक्सेशन की बात कर रही हैं और इतना सब बात कर रही हैं, तो मेरा ये सवाल है कि एक CA जो है
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज सीए की इनकम क्या होती है? If I have to start with the income, if you're a CA intern student, honestly speaking, मेरी जब first articleship शुरू हुई, मेरी salary थी 6,000 rupees. I worked for 6,000 rupees. When you're a CA intern and an article student, you cannot expect to earn. You will be grounded to do everything. However, once you become a chartered accountant, inshallah, your first package will be 80,000 per month. That is the beginning as a fresher. So once inshallah you find your field of expertise either in taxing, accounting or auditing, with that experience you can grow. So the minimum package is any company will offer you 70 to 80 per month. Moving forward, आपके experiences को, आपके talent को, they will raise your packages as well. And बाहर भी इसका बहुत scope है, जहाँ पे Canada, Australia and Middle Eastern states, Dubai, Qatar, Doha, बहुत scope है इसका. I would like to add one line here. Yeah. CAs are the preferred candidates to become CEOs or CFOs in any large corporate house. Yes. Also, our Prime Minister, And Mr. the Narendra Indian Modi, CA had also told a CA's signature is more valuable than his own signature. In one of his webinars, I remember that. So, okay, yeah. the CA's nature of work, especially holding the position of a CA from Indian institution, is being recognized as one of the world-class expert in this domain. So therefore, anybody who completes CA in India, he has an opportunity not only to work with large corporates as a CEO or a CFO, he also has got an opportunity to work in overseas, especially in UAE or in Middle East markets. They prefer an Indian chartered accountant to lead their. Jazakallah khair. Amin bhai, I think it's valuable information since you travel across the world and you meet with top heads of multinational companies. तो अमीन भाई की एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर आप CS और CA के बैकग्राउंड से हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में लीडरशिप रोल्स में आप देख सकते हैं अपने आप को. यू कैन बी द CEO ऑफ टॉप कॉर्पोरेट्स एंड देन यू कैन एक्सटेंड योर career in international horizons as well. Yeah, I will give you other side of story. CA and CFO may be a default CEO and CFO. Okay, a CA can be a default CEO and CFO. And a CA, if it is a CEO and CFO, by mistake, if he is holding this position, then he is been bound to learn all these accounting practices, whether he like this subject or not. Yes. तो आप दोनों तरीके से आप या तो इसके एक्सपर्ट बन के जाइए या वहां पे जाके बैठ के रूल करिए, या आप वहां पे बैठेंगे फिर आपको मजबूरी से सीखना पड़ेगा ये सब चीज. I would thank you very much, Jazakallah khair, Amin bhai, and also Sister Atiya. I would like to bring to your notice one important case which is in the newspapers now. एक शख्सियत है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही नामदार शख्सियत है जिनको हाल ही में अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर केसेस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. मनी लॉन्ड्रिंग का केस था. हालांकि चंद साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उनको पासपोर्ट और पैसा दी थी कि वो दूसरे कंट्रीज में जाएं और अपने फाइट के लिए, वो एक्टिविस्ट हैं तो अपने फाइट के लिए फंड्स भी इकट्ठा करने के लिए उनकी परमिशन थी. मगर अब जो हालात है कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ये केस का सेंटेंस आया, यानी वर्डिक्ट आया, जस्टिस जो मिला उनको वर्डिक्ट, उसके अंदर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला. यानी उनको एक शख्स का मर्डर करने की जो सजाएं होती हैं वो सजा के बराबर ये सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की. ये मैं सिस्टर अतिया से जानना चाहता हूं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में पेनाल्टीज और सजा होती है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, इतने सख्त हो सकते हैं कि कैन यू बी गिवन लाइफ पेनाल्टी फॉर दिस? Yes, if I have to talk from the department's point of view, they consider it to be a very punishable offense and they truly held the individual responsible. They will not even hold the charge. I think Sister Atiya's video has been stuck. Oh, okay. So we apologize. I think there is some technical. I would like to add here. Yeah, please. Of course, this is a problematic area. When you have certain transactions which are not built properly, effectively on
the day-to-day affairs. And if you don't have the proper records, since the absence of the records, the authorities can frame the transaction as illegal and illegitimate according to their discretion. So if you make the absence of providing the records, then they have got the discretionary power to put those blames on you or claim that those transactions are illegitimate. So it's better we keep the transactional records to defend ourselves, rather giving the control in the hands of authority to define and decide what kind of sections they push on us on those transactions. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर हिसाब किताब रखने से चूक जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहेगी और उस ऑफिसर के पास अथॉरिटी रहेगी, वो अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को इलीगल और क्रिमिनल बना सकते। तो देखिए हम लोग टैक्सेस को इतना इजी ले लेते हैं, मगर गहराई में जाएंगे और इसे समझेंगे, इसका सिस्टम और इसके जो पेनल्टीज और इसके जो पनिशमेंट्स हैं, अगर इसे आप अपने आप को इल्मदार हासिल नहीं करेंगे, इसके बारे में इल्म नहीं हासिल करेंगे और इसके बारे में आप अपने आप को आगाह नहीं करेंगे, तो आगे चल करके इतने सीरियस चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकते हैं। तो अल्लाह करे कि हमें क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए भाई, एक सवाल आखिरी ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। I just want to know when we purchase agricultural land and when we purchase a commercial land, which is which has a higher tax we have to pay. Do you have to pay any tax for the agricultural land? Is there any difference in the proportion of tax we pay? You are a farmer? Sorry? You are a farmer? Yes, I am a farmer. Then you will get a benefit of buying agri land. If you are a farmer. Okay. यानी आपके what पास is the benefit I want to know? उमेर साहब, आप फरमा रहे हैं कि आपके पास में पानी है। हाँ, मेरे पास पानी है सब। हाँ, तो पानी रहा तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, बोलकर रिप्लाई है। Yeah, I want to know the proportion. I mean, what is the taxable amount? What is the taxable percentage? लैंड रखना एक अलग है, एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करना एक अलग चीज है। आप जब एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करते हो तो वो इनकम जो जनरेट होता है वो एग्जम्प्टेड। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे, उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो इस बिल्डिंग को टैक्स लग जाएगा, उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम है। आप एग्रीकल्चर लैंड लेंगे और आप उसके अंदर समझो फार्मिंग करेंगे तो उसका जो इनकम है वो एग्जम्प्ट। Okay, Amin bhai. I just wanted to know that if how much of property tax you have to pay on the agricultural land. See, it depends on the crops, I think. The commercial, if you are doing some commercial crops, then there is a taxable income. If there is non-commercial crops, then it is exempted. Rafi bhai, you need to unmute yourself. Yeah, thank you Mushir bhai for that, and thank you Ali bhai for the interaction. Thank you Umair bhai. And Atiya is also back. Okay, good. So at this moment we would like to inform you that we would like to collect the name of the city that you are participating from. मेहरबानी करके आप चैट बॉक्स में जो सिटी से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नाम हमें जरूर दें अभी फिलहाल इमीडिएट, और हमें जानने की ये दिलचस्पी है कि आप कौन से सिटी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आप इंडिया से बाहर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंट्री का नाम भी हमें दें। तो माशाल्लाह देखिए, हैदराबाद है, वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता है, बेंगलोर, मुंबई, बरेली, यूपी, हैदराबाद अगेन, हैदराबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, दमाम से हमारे दोस्त पार्टिसिपेट किए, मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं, किंगडम सऊदी अरेबिया से हैं, हैदराबाद, तमिलनाडु, जद्दा, कुवैत, माशाल्लाह माशाल्लाह, राजमुंड्री फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यूएई से हैं, कतर से हैं, बनारस से हैं, बेंगलोर अगेन, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिंगापुर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं खान साहब, ओमान से हैं आबिद साहब, माशाल्लाह, हैदराबाद से अस्मा जी हैं, और महेंद्रा फ्रॉम बेंगलोर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। देखिए, हमारा ये जो वेबिनार है सिर्फ इंडिया में नहीं मगर इंडिया के बाहर भी बहुत से कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें बहुत बेहद खुशी होती है और मुसरत होती है कि आप अपना संडे कीमती वक्त हमारे साथ में बिताएं। एंड दोज हु आर आउटसाइड द कंट्री ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स आपके टाइम जोन्स बहुत अलग होंगे,
एंड इसके बावजूद कि आप टाइम जोन्स अलग हैं, किसी में शाम है, किसी में दोपहर है, आपने संडे मॉर्निंग हमारे साथ में ट्रिची फ्रॉम तमिलनाडु, ट्रिची वंडरफुल, दौलत खान साहब, तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम तहे दिल Someone से has आपका joined from Nigeria. वन फ्रॉम नाइजीरिया, मुशीर भाई, Yeah, माशाल्लाह। yeah, he is not Indian. He हाँ, told me he is not be able to understand Indian language. ओके ओके, So, but still he has joined and tried to take the information. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आई मीन थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा को हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दिस इज नॉट द ओनली वेबिनार टुडे। ऑफ कोर्स द टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रूशियल दैट वी have planned it for tomorrow, that is next Sunday as well. So next Sunday we will have the concluding part of the webinar on plan your taxes. In the meanwhile, एक हफ्ता जो आपके पास में रहेगा, the week that you have from tomorrow Monday to again Saturday, we would like to engage in the WhatsApp group, and then Sister Atiya will post the slides. जो भी slides आपके सामने आपके स्क्रीन पर आप देख रहे थे, वो स्लाइड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपके लिए देंगे। आप स्लाइड्स को फिर एक बार देखिए, पढ़िए, उसके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पार्टिसिपेशन को ले आइए। सिस्टर अतिया आपके सवाल के जवाब देंगे, और अगर आप उनसे पर्सनली बात करना चाहेंगे और उनसे आप पर्सनली राय मशवरा करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उनके साथ चैट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगले संडे के लिए प्रिपेयर होकर आइए, क्योंकि जो भी आपने आज सीखा है, जो भी आपको खुलासा मिला है, वो अपने बिजनेसेस में, अपने घरों में उसे अप्लाई कीजिए, उसके प्रैक्टिकल यूज में आप एक्सपीरियंस कीजिए। उसके अंदर अगर आपको कोई तकलीफ होती है, डाउट्स होते हैं, जरूरी बात है, लाजमी बात है कि टॉपिक इतनी बड़ी है और इतनी गंभीर टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, आपके डाउट्स को आप लिख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप चैट कीजिए। मगर ये गुजारिश है, आजीजाना गुजारिश है, कि व्हाट्सएप ग्रुप को आप स्पैम मत कीजिए। अल्लाह का वास्ता देता हूँ आपको, फॉरवर्ड करना, ये मैसेज देना या किसी और प्रोग्राम को प्रमोट करना, इसकी इजाज़त नहीं है। हम लोग सबके लिए ओपन रखे हैं, मगर किसी ने मिसयूज करने की कोशिश की या स्पैम करने की कोशिश की, तो हमें मजबूरन उसको एडमिन वन में डालना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आपको भी अजर मिलेगा और दूसरों को भी अजर मिलेगा। और ISCCB का ये कमिटमेंट है कि हम आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज दें, आपके बिजनेसेस को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और आपको कहीं ना कहीं डाउट आ गया और कहीं आपको डाउट्स हैं, तो आप उसके डाउट को जरूर क्लैरिफाई करें। मगर ISCCB का मंशा यह है कि अपने कारोबार को, अपने घरों को, अपने फिनेंसेस को आप दिन ब दिन तरक्की करते जाएं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स के साथ में मुलाकात करने का ऐसे वेबिनार्स में हम लोग आपके लिए इंतज़ाम करते हैं। हम कोई फीस नहीं चार्ज करते, हम कोई फीस, वेबिनार फ्री रहेगा, व्हाट्सएप के अंदर आपका पार्टिसिपेशन फ्री रहेगा, स्लाइड्स फ्री रहेंगे। जब आप पर्सनली, आप अतिया जी से हो या किसी चार्टेड अकाउंटेंट से आप पर्सनली उनके सर्विसेज लेंगे, तब उनके चार्जेस आप उनको पे करेंगे। ISCCB does not benefit from any of these transactions and we are not here for any financial benefits. हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत है, आपके कारोबार के अंदर तरक्की है और हमारे देश की तरक्की है कि आप टैक्स बनने वाले बने, बिजनेसेस को बढ़ाने वाले बने, और आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो कि कहीं भी आपके बिजनेस में कोई भी कोताही ना हो, किसी ऑफिसर की जरूरत ना हो कि वो आकर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे या आपको कोई धमकी दें या आपको कोई डराए। यही हमारा मकसद है कि आप अपने बिजनेस को फख्र के साथ में, अल्लाह के शुक्र के साथ में आप करें। यही मकसद के साथ में हम लोग बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस प्रोग्राम्स को हमने पेश किया है। अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन। और जो कुछ भी हमने आज सीखा है उसमें बरकत अता फरमाए और हमें और आगे चलकर सीखने की तौफीक अता फरमाए। WhatsApp link chat में है। Those who have not joined can join the WhatsApp group and ask your queries. प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप पार्टिसिपेट करें। उसका लिंक जो है चैट बॉक्स में हमने बार बार डाला है, उसे क्लिक करेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे। और जो हजरात आज का सेशन मिस कर गए हैं, जो आज अटेंड नहीं कर पाए हैं, आपके दोस्त या रिश्तेदार, वो नेक्स्ट संडे जरूर व जरूर हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। अब आगे चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब नूरुल अमीन साहब को कि अपने क्लोजिंग रिमार्क्स पेश करें और वी विल वाइंड अप इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। So I don't know whether your video is not on.
1 minute, just hold on. Actually, I was looking into the chat box. Okay. Can you see me now? Yes, Yeah, clearly. Yeah, and once again, I thank the entire team of ISCCB for organizing this event, wonderful event, alhamdulillah. Special thanks to Dr. Rafiullah Saab, of course, to our, the lead panelist, and I can call as the expert of our tax domain, Sister Atia, and our friend Syed Ali, who worked very hard in moderating this entire session. I'm very, very thankful to all the participants who attended today, including Mushir Bhai, who supported us in the background, and also the team members who supported us in advertising and marketing this program in different groups. And our secretary, who is always very active and who contributed a lot towards this program in organizing it. It was a very short notice. Alhamdulillah, we got a reasonable number of participation, but we expect more crowd to gather. Hamara kaam hai ki we will share the knowledge to the rest of the community everywhere, wherever there is an opportunity comes. So these are new learnings, practical challenges हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह. आगे भी जो गोल्ड के बारे में या आपके लैंड के बारे में, जमीन के बारे में, या कोई आपके दूसरे एसेट क्लासेस के बारे में जब जिक्र होगा, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बात होगा अगले में, और पोंजी स्कीम्स के बारे में हाईलाइट किया जाएगा, तो लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा आप इकट्ठा करें और आप ये पैगाम पहुंचाएं कि ऐसे वेबिनार को अटेंड करें, अपने सवाल जवाब, मतलब जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो यहाँ पे रेस करें. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब उसका दे पाए. अगर हमसे नहीं हो पाया तो हम सही, कम से कम आपको सही डायरेक्शन देंगे. ये यकीन रखिए कि हम आपको मिसलीड नहीं करेंगे. तो आप इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को पूरी तरीके से अटेंड करिए अगले संडे को. और इसके साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड. ये वार्म थैंक्स टू द एंटायर टीम and thanks to the entire audience. Thank you so much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum rahmatullah. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, Amin Saab. And Ali Bhai, would you please give your conclusions for the event today? Thank you, Rafi Bhai. देखिए, this program was very important. We, as I told you, that आज जो है हमारे जो we will have to create a habit. आप जब फरमाए कि when we have 1 week of time tomorrow for next session, so we should be able to get a lot of questions and a lot of doubts we expect from each and every participant here, and also I request participants to bring in their other people also. This particular subject is very, very important and very common for everybody. I would say that it is to be needed from every individual. It doesn't that every individual should be a part of this nation building program here. That is what my request is, and we have to make this as a habit that we should be working on our finances and accounts so that we will be a taxpayer tomorrow, and also we'll take the benefits of this. Inshallah, I look forward for the next week's program, and I would expect that we'll have more participations in this, inshallah. And thank you very much, Ali Bhai. Thank you very much. Yes, attending this program. Now, moving further, we come to the last agenda of today's webinar, and that is to thank all the participants for your wonderful participation. Thank you very much for giving us an opportunity to serve you. Thank you for your questions, and thank you for your wonderful participation. We look forward to have you participate with us in the next Sunday's webinar. And until that time, please engage yourself into the WhatsApp group like requested by Ali Saab. There are other people here that I would like to thank and extend my thanks for their wonderful support during the entire preparation. We would like to thank our MC member Jawad Saab, Azim Khan Saab, and Syed Mushir Saab, and Hussain Saab for their wonderful participation. Akbar Sharif Saab, thank you very much. And the entire team of ISCCB MC Group, thank you very much, brothers and sisters, for your wonderful participation and your support in circulating this event into various groups and then promoting this activity in various platforms. My request to our Secretary Saab to make a short dua before we conclude the session for the day. So my request to Amir Sharif Saab, आप एक दुआ के साथ में इस प्रोग्राम का completion करें. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Thank you very much, Dr. Rafiullah Beg Saab, our Honorable President, Vice President, and Syed Ali,
and the entire MC team, Dada Pir Sahab, Mohammad Dada Pir Hussain. Sahab is also here, yes. Yeah, Mohammad Hussain, our Jawad Bhai, and Sister Atia for her contribution. Thanks a lot. Thank you, everybody, and thanks for all the participants who had participated in this webinar. So I would thank a lot. I mean, thanks a lot for the entire team. So let's hope that our community gets benefited from this knowledge of sharing what we had done today, and inshallah next week also, following week also, we'll be having the same webinar. So let's make dua. Darud Sharif padh le sabhi ek bar. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin barik sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I request the MC members to stay back for a short discussion, and all the participants can log off and enjoy your Sunday and get ready for Zohar Namaz as well. तो दुआ में याद रखिए, जज़ाकल्लाहु खैर फिर से एक बार, और हम मिलेंगे लाइव सेशन में नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह. तो हमारे MC members जो हैं, please stay back. We will have a short discussion and then all the participants can log off. मैं गुजारिश करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं IICCB के MC ग्रुप मेंबर्स के अलावा दूसरे लॉग ऑफ कर लें. ज़ोहर की नमाज का वक्त है तो हम नमाज के लिए भी तैयारी कर लें. अपनी दुआ में याद रखिए, IICCB के लिए दुआ कीजिए, उनके सारे मेंबरान के लिए दुआ कीजिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए. अल्लाह ताला सबको खैर आफियत के साथ में जिंदगी करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वो ज्वाइन कर लें. जी, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स जो हैं, वी हैव बीन ऑन पोस्टिंग ऑन द चैट, एंड देन we request you to join the WhatsApp group by clicking onto the link posted onto the chat box. सेक्रेटरी साहब आप आ जाइए, इस वीडियो पे आ जाइए. हमारे मुशीर साहब वीडियो पे आ जाइए. अली भाई आ जाइए वीडियो पे. थोड़ा लाइटिंग अच्छी कर ले तो. हाँ, लाइटिंग अच्छी कर ले. आपका चमकता हुआ चेहरा भाई, लाइट कम रहा तो भी परवाह नहीं. सर पार्टिसिपेंट्स को एक बार रिक्वेस्ट कर दे कि ग्रुप छोड़ दें MC मेंबर्स के अलावा. जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी आप IICCB के मेंबर नहीं हैं, MC मेंबर नहीं है, तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं. हमारी एक पर्सनल मीटिंग अब शुरू होने वाली है जिसके अंदर MC मेंबर्स, मैनेजिंग कंपनी मेंबर्स ऑफ IICCB सिर्फ रहेंगे. बाकी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लॉग ऑफ कर लें. उमेर भाई आप वीडियो ऑन कर लीजिए. शरीफ भाई वीडियो ऑन कर लीजिए. मुशीर भाई वीडियो ऑन कर लीजिए. जी जी जी. Sister Atiya, can you put your video on? Yes. Very good. So your laptop was there until वो टाइम जो फिक्स कर लिए थे क्या लैपटॉप में के 12:45 को वो खराब हो जाएगा या? My sincere apologies. It just ran into problem. I have no idea how, because it is a new laptop I've purchased, and that's the reason I immediately logged in with my phone then. नहीं कोई बात नहीं. It was working magically till 12:45 PM. जैसा ही 12:40 PM वो हमारा ऑफिशियल टाइम कट हुआ, आपका लैपटॉप बोला मेरी ड्यूटी तो हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए. So we would like to congratulate Sister Atiya for carrying on this. It was a wonderful session, Atiya. Thank you so much. Thank you for all the support that you all have given me. You're most welcome. However, there are lots you can improve and grow, and yours was the first live webinar today. Yes. And with the kind of training and feedback and all those learnings that you had, you can do much better in the forthcoming webinars, inshallah. Yes, inshallah. Sharif Saab, और कुछ members are there. You've done a wonderful thing. Wonderful job, Atiya.
Thanks to you Thank you for so much, sir. committedly working towards this, and you played a good role, and you have a long way to go. It's just a beginning. Don't Yes, relax, inshallah. just a beginning. Next session इससे धमाकेदार होना चाहिए. और हाँ, मेरा एक इंशाल्लाह. रिक्वेस्ट है, आप जो स्लाइड्स बना रहे हैं, मैं जो कुछ चीजों का आपको बोला था, आपने कुछ भी नहीं किया है. अगली नहीं, बार मनी आप लॉन्ड्रिंग जरूर आपको इंशाल्लाह करिएगा. I'll cover बहुत it. सारी चीजें आपने नजरअंदाज किया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा गया. लेकिन अगली बार जो है थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे अगले वाले, ताकि उस चीज को कवर करें. गोल्ड के बारे में अच्छा से बात करें और जमीन के बारे में अच्छा से बात करें. ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमारे कौम में. तो हमको उन्हीं चीजों को बात करना है जो हमारे कौम के लाइफ लाइन को कनेक्ट करना है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पैसों का लेन देन, कैश लेके घूमना. हाँ, चाय का दुकान में 50,000 का धंधा कर लेते हैं रोज का धंधा बोल रहा हूँ. तो सोचो 15 लाख का धंधा करते हैं, लेकिन उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देखिए तो 15 लाख रुपए का ब्लैक मनी जमा हुआ है उनके पास महीना में, क्योंकि उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है जिसको डिक्लेयर नहीं करते बरोबर. सो 15 लाख का आपका जो ट्रांजैक्शन होता है, तो साल का आपका हो गया करीब 2 करोड़ रुपया. इट्स ए ह्यूज टैक्स लायबिलिटी. एकदम सडन से आ जाएगा सर पे. पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल तो चाय का पैसा भी लो ऑनलाइन में पे कर दे, है ना. गूगल पे कर दिया, चाय का पैसा अभी पैसा लेके घूमते नहीं, आजकल सब डिजिटल मनी हो गया. तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए. अगला वेबिनार इंशाल्लाह आपका पोंजी स्कीम के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर. आप देखो थोड़ा बहुत आप बात करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा. आज मिला ना आपको? हाँ. You got it right? Yes. You got the support or not? Yes, I surely got it. Alhamdulillah. Have you got full support? Yes, I. तो हम आपको कवर करेंगे. कहीं पर भी अगर गैप रह गया तो इंशाल्लाह we will cover as a team. So we will all support you and make sure that you are delivering your duty perfectly. Yes. हाँ, मुशीर भाई और अली भाई, आपसे Don't worry, we are जानना here to चाहूंगा. support you and guide you. So please, your communication skills are amazing. I will congratulate for the confidence you have when you talk. That is very good. It's very important also. You have a very good eye to eye, as rightly said by Hussein bhai yesterday. Eye contact both. Thank you. Jazakallah. This is a wonderful thing what you have done. So आगे चल के इंशाल्लाह we will get more chances to do well, and I am very thankful. बोलिए दादा साहब बोलिए. जी रिकॉर्डिंग स्टॉप करे तो अच्छा है. शायद इनफॉर्मल मीटिंग है सर. आप बोल रहे थे और हमें भी समझे थे.